Welcome to the new episode of Inexperienced. Today's guest is Rajvi Soni, someone I know for a year now, dear friend. We discussed a lot of things, whether it was the reality of Gujarati food and how what men do wrong when they approach two women, or whether it was making a lot of jokes which might offend some people. So that was great. And also, I seriously think when this episode will come out, there's a high chance I'm getting cancelled. But the conversation was worth it. So do enjoy. The episode begins in three, two, one. Cool. The setups takes a So, time, huh? It takes a lot सेटअप of patience and बट everything. हाँ बट फर्स्ट मीटिंग लाइक फर्स्ट एपिसोड से लेके अभी तक बहुत टाइम टाइम कम हो गया है अभी लाइक आई Yeah, गेट द होल एटलीस्ट द फिजिकल सेटअप इन 5 to 7 minutes पहले लगता yeah. था भाई 10 मिनट तो फर्स्ट डे आई रिमेम्बर जब तो कैमरा सेटअप कर रहे थे इट टुक लाइक Hmm. हाफ एन आवर टू काइंड ऑफ गेट द एंग Angles so and everything. Now that that you is have got hands on, you are getting हाँ better हाँ at that. better at it हाँ Yeah. So I like fun fact. I don't know if you know this. Of course you don't know it, but like you are the first female guest on our podcast. Yes, I know that. Yeah, I was I actually know. observing that, but I will be the first female Yeah, guest. yeah, yeah. So how you gonna like kind of handle that fame moving forward? Sorry, I didn't get How fame. you gonna handle that It's fame moving forward? it's all your Dane, if you can get it. अच्छा It's अच्छा all your Dane. Thank you, sir, हम्म for having me on your podcast, first अरे of नहीं all. नहीं भाई 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 इतना इतना वैलिडेशन नहीं चाहिए एक दिन में too much No, validation for no. a day I नहीं नहीं want you to reach that milestone, and then I can say that I was the first हाँ female भाई guest on Aditya's ये बंदे को देख रहा podcast. है यूट्यूब वीडियो बनाता है जानता है बुलाया था मेरे को वहाँ I was राइट the first राइट female guest. I will share फर्स्ट you the फीमेल link. के You watch भाई the. You watch it. bro yeah bro that is cool I was that's cool actually नहीं very nervous हम्म, when you said that when you offered me to हम्म, come. I was yeah actually yeah very nervous. I was like, why is he asking me to do such things? I'm very conscious about all that, and I'm very हाँ हाँ scared of actually speaking. I was like, हाँ हाँ if it's an audio podcast, I will still be okay. And then I saw your first podcast. I was like, shit, it's sorry, I can use that word, right? हाँ cool there's I no was problem like, with cursing दबा के I गा was दिया like, तो कोई दिक्कत नहीं है नहीं घर पे हो sorry. हाँ cool same I was like, shit, yeah ये तो यार हाँ audio भी record कर रहा है, हाँ video भी तो record कर वीडियो रहा भी है. How रिकॉर्ड am I कर रहा है gonna हाँ do? I'm like, how yeah am I gonna do? I was like, होगा, जो होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या डालेगा नहीं वो उस पे हाँ हाँ YouTube पे. I was like, okay, fine, चलता ठीक है रहेगा, but चलेगा I will हाँ also get an experience. हम्म तो next time मेरे को right आदित्य बोलेगा तब मैं prepare ज्यादा रहूंगी. पेपर हाँ If there's नहीं an ठीक है experience. लाइक या लाइक द फर्स्ट टाइम दैट वी रिकॉर्ड एक ऑनलाइन पहला एपिसोड किया था बट इट डिडंट काइंड हाँ, ऑफ meet the expectation that we are trying to kind of do yeah, तो वो रिलीज नहीं किया अच्छा, एंड बट सेकंड फिर रिकॉर्ड किया वी वर लाइक डूइंग इन आवर होम इटसेल्फ एंड okay. वो जस्ट सिर्फ एंगल चेक करने के लिए रिकॉर्ड किया था वो इट वाज हम्म. नॉट मेंट टू गो ऑन यूट्यूब and we ended up अच्छा, sharing so many personal things that we had to cut in every 5 minutes to mean like we recorded for like 45 minutes और सिर्फ 16 मिनट का कंटेंट गया है यूट्यूब पे बिकॉज वी अच्छा. एंडेड अप शेयरिंग क्योंकि दो लौंडे बैठे हैं कर रहे हैं It's बात like, yeah, and the हाँ flow goes. फ्लो में चल रहा है और जो जो बिकॉज इन आवर हेड वो लाइक यूट्यूब से आएगा नहीं तो खींच रहे हैं एक दूसरों की और But बीच बीच such में things हाँ always makes to YouTube. The one हाँ we हाँ think should not be recorded यूट्यूब are the हाँ best ones to put on YouTube. हाँ हाँ तो या वी And that's how we लाइक learn. हाँ दैट्स हाउ वी तो वो तो है या Say yeah. You सो have a यू co-host वर also, I guess. हाँ co-host like we had he was like he's more interested in doing offline podcasts as compared to Yeah, online ones. So see the he said he like he'll join only the offline ones. And I yeah. was like, No, okay, no. I'll take up the online ones too. That's good. You were saying something, sorry. I was saying that like you texted me that we'll talk about self development and Yeah, spirituality. Like तो yeah. when I heard the both words, तो मेरे को जब self growth समझ आया था I was like okay Rajvi. But when I heard spirituality, I'm like okay that's something new. Like how like spirituality and you like how that came into like a I similar page. I am like very much into it. मेरे को बहुत Okay. जानना and maybe हाँ हाँ lockdown affected me a lot because रामायण हम्म आती थी महाभारत आती थी हाँ and हाँ I हाँ used to have so many questions like I know the Hindu history and the Indian history is like जितनी पढ़ो उतनी कम है and जितनी you पढ़ो get to उतनी कम know है हाँ अलग thing and it was first yeah. on history only the emperors and everything but then Yeah yeah it went back to Ramayana Mahabharat and हाँ learning a हाँ lot of things
I guess it started a new, you know, interest, and I used to ask my father also. I actually decided to read Bhagavad Gita, but I'm still finding one which I can understand. Okay. Okay. So Okay. yeah, and then I came into if you know Ranveer Alabadi, he's quite famous for such stuff. Yeah. So I came Hey. across his podcast and everything, and Yeah. I wanted to know more, and that's how my interest went. And when I started talking about spirituality, I realized my friends also are into this thing very much. Okay. And it's just we didn't get a connection of that, or we didn't find a person to talk about. Yeah. So that's how it started growing, and that's how it started learning about things. So yeah, I'm quite much into it. I'm still one Ranbir Alawade is one of the person who I follow. Like he also Same. says ghost Same. I follow. I stories. follow. Yeah, हाँ. horror stories. So Yeah. that's what interested me more. ये बंदा horror story बोलता है मेरे को देखनी है. I'm much मेरे of को a देख horror देख. person. हाँ. But Oh फिर वो really? horror से yeah, हाँ. I'm a big horror fan. Big horror fan. And it then went to the spiritual content and everything, like God and Tantra Vidya and everything. So that's how it started. The whole journey is like that. Cool. A So if bit like from अगर here, a किसी bit को from there. वर्ष वगैरह में करना होगा तो I get contact basically, right? Yeah, yeah. Cool. I have your number. Jugaad. That will be so great. Believe me, I have names of so many people to manipulate. So like, We can do something to make this YouTube channel big also then. like you never know, bro. Like you never know. The No, no. boundaries are endless. Like say the Endless. opportunities are endless. Endless. Yes, yes. हाँ. And we both have like some knowledge about it. कुछ जुगाड़ करके कर कुछ ना लेंगे. कुछ तो कर लेंगे. हाँ, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे. हाँ, But do exactly. you meditate regularly? Yes, I have started. I have हाँ. started. Yeah, Oh, like yeah. past 1 महीने से हो रहा है. It सही है. wasn't कितने that दिन? consistent. It wasn't that consistent, but अभी धीरे धीरे consistent हो रहा है. Like it was for सही 10 है. minutes, 15 minutes. छोटी थी जब I was in school. I used to regularly meditate, but वो आदत छूट गई थी. Bro. Yeah, Oh. I used to regularly meditate. I used to have this. My mom had made me a habit of reciting Hanuman Chalisa every day. Ah, So cool. वो आदत Cool. भी मेरी छूट गई थी, but because of the spirituality thing, it started Yeah. back. So I'm feeling Back. very much happy that I have got those things back. And helps also. It helps a lot. I can say you mentally have so much things going on, but because of all that, you have something to calm yourself. So I meditate like 15 to 20 minutes every day after Yeah. after waking up. So yeah, Yeah. that's how I meditate. So you go for like breathing or mantra? No, breathing. I can't Yeah. remember mantras every time. So like it's Om. Like mantra, I can say Om and concentrating on the breaths. Cool. That's Cool. how So I like, meditate. like even I have tried it like sometimes. अभी नहीं, but 2021 में एक बार try किया था. So I stayed consistent for like 1.5 months. उसके बाद जो consistency break हुई है, अभी तक भी Yeah. चालू नहीं हुई. I actually don't want to break that consistency. So even if I bro, have like 5 it's so minutes, hard. even if I have 5 minutes or 2 minutes, I will try to do that. You'll get क्योंकि it. एक बार छूट जाता है ना तो वो आलस आ जाती है हाँ. आप में कि यार चलना फिर कर लेंगे. It's So also like one thing that like I don't know, maybe the excuse, but kind of also the reason that कि अगर consistency नहीं भी हो रही तो I'm not facing that many problems, that I've got into a habit of writing. yeah, So like it kind of meditation and that kind of works on the same pace. So okay. if you're But you writing, should, either you're meditating. But I should yeah, try it. Of course. yeah, you should. Actually, if you can't do it in the morning, do it before Mhm. bed. You have your हाँ. mobile in hand. We always have that habit of using mobile. Just keep the mobile aside and do it for 15, 20 minutes and then Yeah. go to sleep. You will have a Yeah. great effect. Not gonna lie. I tried. I was like, this is bullshit. There is doesn't help and all. हाँ, But it did. It every did. teenager starts from that point. Like this is bro bullshit. And actually, for what हाँ, our हाँ. culture has taught us, it's very much useful. Mhm. Like you are having lots of depression, but if you follow this routine, you Yeah. will find some solutions. You will find some peace that you are actually Yeah. looking for. Yeah. So yeah, So, it's great. Start it. This is your motivation to start it. maybe I have to take up thing. Huh? But like also with peace, like how do I frame this question? Like mm, with peace, like कितने सारे activities होते हैं like to kind of figure out that peace, right? Concentrations. Yeah. Concentration and like not just Concentration. meditating with a lot of stuff.
I like didn't get it. Just I mean, suppose that, and this is something that I've been observing for a while now. Okay, yeah, like with meditation, you get peace, but yeah, I've realized that there's lot many activities that you can kind of do to get into a state of kind of being peaceful. yeah. Exactly. Like I've if realized, like I've started exercising. That's yeah, something I've also kind of observed. Ki if you exercise on, usually you are more happy or you're yeah, more you content are. and like, Your that's the mind, thing. yeah, exactly, the peace is like related to your mental happiness, and if Mm-hmm. you are at peace you will find solutions for a lot of things. Like Mm-hmm. you have come home for from a long day, you just meditate for 20 minutes and you will Mm-hmm. feel that everything like shutting down for a while, and you are finding your answers, you are trying to concentrate, your concentration power increases, your creative thinking also increases because you have got that 5 to 20 minutes to think about just one thing or just to Hmm. focus on one thing. So Yeah. that's how it Yeah. also increases a lot. So if that's what your Oh, question is. yeah, kind of. And also, something that I've also realized is that people don't underestimate the value of being disciplined in creative activities. Like, लोगों को लगता है कि they will meditate one time and then creative ideas will come. But it's No. like if you Yeah. do it every day, irrespective of you Mm. having any ideas or not, Yeah. that kind of leads you to a place where you, yeah, कुछ ideas आ रहे हैं. Yeah. It's like a practice to go there, practice to Yeah, reach that creative thinking. You need yeah, to be like calm because creative thinking need that mental patience. You yeah, can't have ideas every 5 minutes. You need to have that हाँ, mental patience. Like it's okay. yeah. आज नहीं आया कल मैं कुछ लिख दूंगा. You have a habit of writing, creative writing. Then आज कुछ नहीं आया कल लिख दूंगा. हम्म, ऐसा कुछ. But you have to get that peace in your mind. You have to get that हाँ, patience in yourself. So that हाँ, 20 minutes, there's your patience a lot. एक तो पहले सीधा बैठो, which we don't have a habit of. सीधा बैठने की तो हैबिट ही नहीं है. I don't have it. हाँ, हाँ भाई, हाँ, सोफा को बेड बना रखा है. हाँ, हाँ, एग्जैक्टली. तो हाँ, सीधा बैठने की आदत ही नहीं है तुमको. आदत तो ही वो जो नहीं. 20 हाँ, मिनट जो सीधा बैठते हो ना, तुम्हें बहुत सिखाता है वही कि annoying है, तुम कितने बहुत पेशेंस होते हैं. बेकार. इट्स हाँ, लाइक अमेजिंग. and also with patience, like social media is like helping us a lot, right? With patience. Arey Oh bhai. my god. Oh Don't. bro, you open up like Instagram and you end up showing for like 30 minutes and you like Oh कि my. अच्छा ऐसा अभी तो 10 मिनट पहले चालू किया था. Then you look at the time, it's like, oh fuck, it's 30 minutes, या right? एक्चुअली वी जस्ट लाइक Yeah. हाँ चलो 10 मिनट स्टार्ट करते हैं, थोड़ा 10 मिनट रिलैक्स हो 10 मिनट जाते थोड़ी हैं. होता है. वो हाँ, 10 मिनट रिलैक्स दस होते मिनट नहीं होता, वो एक हैं. घंटा वो 20 मिनट बन ही एक जाता है. घंटा. Yeah, it's so annoying. आई And like, आई नॉट I'm not gonna lie, हाँ. I had one Mhm. time where my Instagram activity was like 10 minutes a day. 10 minutes a day. Bro, Yeah. like it And was when I now, started Instagram जब account बनाया था same. नहीं, अकाउंट बनाया था नहीं. It was till 2021. It was like 10 Bro, minutes a day. But bro, now it has gone to 2 hours. I'm like, shit, I need to control this thing. I have to go back to my zone. I you need to have to. हाँ. control this. मेरा भी Because like around उसी हाँ, spectrum पे. हाँ. 2 घंटा is like too much. I'm like, I was a 10-minute person. I went to Mhm. 2 hours. Like, this is a big Yeah, leap in a wrong way. a big leap in the wrong way. Right, right. And it's like, and honestly, like now that I'm making content on Instagram, a part of me wants people to watch it. A part of me is like, bro, like Yeah, it's I'm living in a dilemma. I'm living in a dilemma of being like creating content on Instagram or like YouTube. A part of me like, was like, जितना अच्छा देंगे उतना अच्छा है. The no, more they that watch is it, the more. great. No, हाँ, that हाँ. is great. But if you use it 2 hours actually in a correct way, like if you're Mm-hmm. watching some reels that are informative or you're watching something that is Mm-hmm. informative, look, Insta is not just for time pass. You have Yeah, a lot of content these days that helps you. But if you're just watching some jokes type of reel, then it's like you are just entertaining yourself. But if you are yeah. having a podcast like this on Instagram, which it does not allow, but at least even 60 हाँ, हाँ. seconds or a 1 minute reel or Yeah, something, yeah. yeah, it helps you. Like that 1 minute will make you research about it for 1 more hour. So that can be Yeah. useful. So your way of Mm. thinking is actually correct. That if you want हाँ. to make such content, so it is Mm-hmm. correct. I should like it's you should go on हाँ. for that. Yeah. Yeah. But that's how it's a different way how you see social media. Either it's for time Hmm. pass or either it's for something new. हाँ. And So मेरे साथ like, अभी उल्टा हो रहा है. हाँ, I'm उल्टा just हो रहा है. using it for time pass. हाँ. No, I think some leisure is important, but Yeah, definitely.
बट वो एक कंपल्सरी लेजर बहुत। लेजर की तरह होना चाहिए. You should not हाँ let वो that भी है। leisure to take away your productive हाँ time वो भी। also. Yeah, but like with social media, the best time I'm having is over LinkedIn. Oh Yeah, yeah. and tell you why, because the content has just become bullshit, bro. Oh, I know, I know, I know, I like, know. and the best part is like they will इतना अच्छे से content देखना now, and like a part of me is fed up, a part of me just like kind of laughs when I watch that content. They will have the news of layoff in their like headline पे जहाँ पे पोस्ट होता है and the guy is sharing a mirror selfie and there is no relevance to the post and the No photo, relevance. No and like relevance. I'm like क्या content बना रहा है तू? Wait, exactly. LinkedIn is हाँ supposed to be a place where you have to, you are professional. You are yeah professional. But yeah it has started becoming Instagram and uh, Facebook uh. nowadays. So Like like you my share your point. story. So what You I do share your that. story. Oh, sorry. Yes, yes. Go on, go हाँ on, go on. go on like Yeah, इंटरनेट पे यही प्रॉब्लम है, लाइक गूगल मीटा लाइक सामने बैठ के भी प्रॉब्लम नहीं होता जितना इंटरनेट पे होता है। हाँ internet पे go होता on। है. Yeah. हाँ So like Instagram, like you share your stories, but it should yeah, be relevant. it should be relevant, It yeah, should be relevant. It should be relevant। professional enough, or it should हाँ be motivating enough. हम्म। बकवास तो फिर मेरे को इंस्टा और फेसबुक पे भी मिल जाएगा. मिल जाएगा हाँ। सो नाउ आई मेड अ हैबिट जहाँ पे वो बंदे दिख जाता है आई जस्ट रिमूव देम फ्रॉम माय कनेक्शन, आई एम लाइक ओके वन पीपल रिमूव हैप्पी। No, that's very सो true. या Not gonna lie, my LinkedIn also has gone down. मैंने अभी कितने टाइम से LinkedIn नहीं खोला. Open LinkedIn every 5 days or something. Cause एक तो firstly job that it does not allow. मैं घर आके और इतनी थक जाती हूँ, मेरे को फोन हाथ में लेने की भी इच्छा नहीं होती. मन हाँ या नहीं होता. I barely take phone to call my parents कि भाई हाँ आ गई हो safely, ऐसा रहा दिन वगैरह. And if I have a phone, then I will just check the WhatsApp and then I'll go to bed. Like या 2 बजे सोने वाली बंदी अभी 10 बजे बेड में होती है. It has gone to that. So मेरा LinkedIn मेरे को लगता है whenever I open LinkedIn, I see you first of all. मेरे लिस्ट में सबसे पहला तू आता है. हाँ फिर it's अनुपम sir or anyone. हाँ और फिर ऐसा ठीक है। कोई as you are saying that such type of people. आई हाँ तो फिर मेरे मैं जस्ट बंद कर देती हूँ. फिर मैं बंद कर देती हूँ. लाइक ऊपर मूड खराब रहता है लाइक हाँ. मैं आई स्टिल स्पेंड टाइम लाइक मेजोरिटी 5 मिनट्स इन लिंक्डइन, क्योंकि हाँ. वो बस खुला कि किसने लाइक किया किसने कमेंट किया, जस्ट स्क्रॉल लाइक फ्यू लाइक फॉर अ मिनट, उसके बाद बंद। हम्म. लाइक दैट्स माय टाइम इन लिंक्डइन, लाइक Yeah. इट्स आई डोंट एंजॉय इट एज अ लाइक यू नो प्लेटफॉर्म, बट I'm write content on LinkedIn or Twitter a bit because I'm exploring writing. Yeah. So I just No, wanted to you on should. social media. But you know what content should be posted where. You won't post a Twitter content on LinkedIn, of हाँ course. Or a हाँ Twitter, a LinkedIn sort of professional thing on Twitter or Instagram. हम्म Twitter is still you हम्म can post. Twitter is still a professional. Like they have a lot of zones in Twitter, हम्म so you can still go for it. But you won't post a Instagram yeah content in Twitter, LinkedIn or something. That's हाँ great. I have actually seen your writing. I used to read it, and I'm like, either I just like it, and I will be like, I will come back to this thing, and I will read हाँ it. I'll just keep it liked, and then I come हाँ back कि वो and दिख read. जाए। हाँ कि वो cool दिखे. cool cool Like ठीक है। that. I need So some अच्छा LinkedIn tips from you, by the way, no bro, if I want like to I ever am post content, content LinkedIn हाँ जैसा content. LinkedIn जैसा content no like uh, if you will read my content ना, like एक बार once I experimented with chat GPT, it kind Yeah. of made it very lame, तो उसको फिर post नहीं किया, but like my type of content and what I find difference कि मेरा content दूसरे content में क्या difference रहता है with the writing, something that I've observed, like my writing is very conversational. Yeah. It's not like I'm writing an essay like you school may you write a essay to kind of Essay. explain things, like Yeah. I think I kind sometimes struggle to write that kind of content. Mine's like you and me having a conversation in my head and I write that, so mine seems like, so I'll use I'll use words that should be used in conversation or maybe short forms, the kind of thing जो नहीं होने चाहिए when नहीं you're होना writing a चाहिए. proper content. Yeah. But like I just think I write content that's why like podcasting seems so like I like that as a content, no, like Yeah. podcasting nature. Go on. But you can always like that is a better way to write a content, I guess. You can just then recheck it and make the changes. But the flow that Hmm. comes while writing like that is better, I think. हाँ तो लाइक आई एम वर्किंग ऑन दैट कि वापस आकर उसको रीचेक करके ठीक करना, क्योंकि वो मेरे दिमाग में वो फिल्टर नहीं है नहीं होता. कि लाइक हाउ टू काइंड ऑफ मेक इट इन ऐसे थिंग। स्कूल में भी ऐसे आई वाज लाइक
अगर स्कूल में टीचर है, मेरे को ऐसे लिखना है, आई इमेजिन द टीचर इन माई हेड एंड आई राइट इट लाइक आई एम I like टॉकिंग this. टू हिम. Yeah. So like मेरे I had a very वो hard एक time हैबिट kind of बन गई making है. how habit बन गई from the start. हैबिट Like बन गई. it's not that I have to consciously do it. It just has been always Subconsciously the you are kind of the just case. having हाँ that. हाँ, हाँ, I'm just आपके मन having में a वो conversation. that बात चल formula रही is है. fit. A हाँ A हाँ square plus B हाँ, square equals to. बिस्वर हाँ, टू वो एबी. हो हाँ गया है. हाँ, वो हो गया है. अब बात ही हो रही है like that, वो thing है. तो that's why like, but LinkedIn पे content बैठ गया Needs to है, be improved. needs to be improved bro. Like yeah, बहुत सही है. बहुत सही है. हम्म. कोई नहीं, वो भी होगा. Hopefully. Hopefully, like I don't know. Like एक बार I was reading on Twitter, so maybe there's I think Unacademy's founder or co-founder, I guess not founder, is like coming with a new, I guess, एक LinkedIn का एक basically वो competitor app. So I don't know how Okay. true or untrue that is, but he's coming with something. Which app? I didn't get you. Okay, just 1 second, 1 second. No, your voice is clear. I just didn't get the हाँ, name of the app. नाम हम भी भूल गए लाइक क्या था आपका. Okay. इट वाज मेडिंग इट वाज आई थिंक अनअकैडमी के जो को फाउंडर है ना, वन ऑफ देम इज काइंड ऑफ वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट. अच्छा, अच्छा. तो वो था. दैट्स द केस. Everyone is doing things to make profit nowadays. We should also start something. Like suggest कुछ है दिमाग में तो suggest we can start working. I have no problem, bro. I was like, Like I don't know. I have not thought about it. Like, not any startup or idea. मेरे में कुछ आता नहीं है दिमाग में. नहीं आता ना, मेरे में एक चल रहा है but I don't know whether it will come to something. I'm working on. You have started podcast. कुछ तो start किया है. I कुछ have तो not start even किया है. started that. हाँ हाँ मेरे को कुछ करना है. But मेरे को तो क्या करना है मेरे को नहीं पता. हाँ हाँ वो like ये भी like how do I say this? Like I always enjoyed conversation. Like I am listening to podcast from 2020. ठीक है, Okay. तो 2 साल से लगभग I am consuming this type of content. But 2023 में जनवरी में जाके मेरे को आइडिया आया कि okay I need to start. Like क्या? I want to have conversation. तो मेरे को 2 साल लगा वो clarity आने में. Clarity आने में. हाँ कि like मेरे को था कि हाँ बात तो करना है. But like I never thought कि like even I was consuming this kind of content, it never came as a like a natural solution कि I should start podcast. This is what I was telling you about personal growth. Like, I want to do something, but I don't know हाँ. what should I do, which path should I go, because I have so much in my plate right now. Like having to do masters right now and ये job, it just consumes a Job. lot of time and energy Yeah. that I feel like बाद में करूँगी, चलना कुछ करूँगी. हम्म. So, वो भी. So so like it's like, hmm, हाँ go on. it's like time consuming and तुम्हारा हाँ दिमाग यार नहीं माइंड चलता बड़ा. after a long time. So I'm like, आफ्टर I लॉन्ग will टाइम. wait. थोड़ा थोड़ा क्लियर होता जाए वैसे वैसे मैं आगे बढ़ती जाऊंगी. आई डोंट वांट टू गिव माई सेल्फ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. वैसे भी या कुछ होने वाला है नहीं स्ट्रेस से. सो इट्स हाँ बेटर स्ट्रेस दैट से तो आई, कुछ नहीं होने वाला है. हाँ या वो तो है. इट्स लाइक वो तो है. आई शुड लेट थिंग्स गेट क्लियर बाय इट्स ओन. लाइक धीरे धीरे कुछ क्लियर होगा मैं करूंगी. Like I don't know like it's the right way or wrong way, but this is how I figure out shit when I don't know. Like at this point, I just go with gut feeling. ठीक है अभी तो I'm like there have been very बहुत सारे कम situations हुए हैं where I'm like sure from the gut that I need to do this. Do And like this. podcast was one of them. तो ऐसे ideas तो आते रहते हैं. अच्छा I can start a food blogging and all because I enjoy eating food. But वो ideas आते हैं, but if I don't kind of feel from inside कि हाँ ये करना है, then I don't make the effort. So Okay. that has kind of become a filter mechanism where I filter out things. Apart from that, key it's just sometimes because I write, so sometimes I ask myself questions like, अच्छा अभी कौन से I'm just, whatever my age is, whichever phase in my life I'm giving priorities क्या है. So I just ask my questions. तो questions से चीजें figure out हो जाती हैं. It's great thing. हाँ that's great. एक बार प्रायोरिटी क्लियर हो जाए ना, देन यू कैन फोकस ऑन दैट थिंग हाँ एंड यू वोंट गेट सम यूजलेस थॉट्स कि मेरे को ये करना है. हाँ बट इट इज नॉट योर प्रायोरिटी राइट नाउ, एटलीस्ट नॉट राइट नाउ. तो तुम हाँ. उसमें बिना बात की एनर्जी वेस्ट नहीं करोगे. And also one more important thing is like what can you leverage at the end of the या day? Ki like are you at a place where you can spend money to buy time, or या maybe you don't have money so you wanna have to give your time to earn that money. So या वो भी figure out करना important है. So वेरी I'm at a मच.
So I'm at a place where I don't I'm able to balance between my time and money at this point. I'm earning and also वो leverage हो जाता है मेरे से. So that's why I'm able to spend time here. अगर वो Yeah, नहीं होता तो I won't be able to do it. That's true, the true thing. that, true that. That's true. So like this is something I read recently. I was also talking to Siddharth about this. Like the whoever content creators you follow over Instagram telling you to live life in a certain way एक तो मेरे को समझ नहीं आता because I am the kind of guy don't tell me how to live life ठीक है don't tell me how हाँ, to do things I'll figure out that myself but I read a tweet about something that the content creators that share their life and tell you how to live life it's very easy to get there intellectually but it's very hard to get there operationally okay. And like that is actually very हाँ true. like ये you like sometimes that you need a certain amount of money to like kind of do things तो आपके Do दिमाग में things. पता है कि हाँ भाई इतने पैसे आएंगे तो कर लेंगे हाँ, but you're not there you haven't not like Uncle Waribu shares he's at हाँ, like 40 50 so his way of living life and mine will be different because we are just of at course. different phase of our life right वो And operationally he and to buy that thing, he has that amount in his hand. We हाँ don't. हाँ we don't we have to figure out that shit right We have to figure out. He has this thing figured out, and I think so. हाँ It also took him time to do that. of course it Of course. So we हाँ have plenty of time to figure out things. I don't think हाँ so. Rushing things is like one of the way to live. Firstly, like हाँ दूसरों का देख के तुम खुद पे मत करो. You had different situations. हम्म You yeah, inspire from them. Get हाँ inspired हाँ from them. Get their ideas. Get learn from their ideas. हम्म So you can do that, but don't follow like blindly follow them. कि भाई हाँ ये ऐसे जी रहा है मैं भी ऐसे जीऊंगी. हाँ This is not a way. Yeah, this is not and that's it's that. in a Sorry. okay no problem set up no issues so I was saying like also that like what they share are not बुरा है ऐसा नहीं that नहीं नहीं नहीं, gलत नहीं they definitely not. like make sense sometimes you can have access to certain things and you can have access to certain कुछ चीजें access होती हैं कुछ चीजें नहीं होती नहीं, so like but it sometimes it's hard to accept that like ये तो बंदा कर रहा है तो मेरे को भी करना है मेरे को भी करना है. हाँ बट दैट इज लाइक उसकी स्ट्रगल्स डिफरेंट थी, तुम्हारी विदाउट डिफरेंट होगी. तुम भी पहुंचोगे वहां पे. यू विल राइट ऑल्सो रीच वन डे. बट मे बी यू हैव टू बी मोर पेशेंट देन हिम, और यू हैव टू हाँ डू मोर स्ट्रगल्स देन हिम. हाँ सो राइट राइट होता है. किसी किसी को एक दिन में रीच मिल जाती है, तो किसी किसी को 10 महीने लग जाते. लग जाते हैं सही बात बट सही होगा, बात होगा होगा ये हाँ कंसिस्टेंट डेफिनेटली. तो रहना जरूरी है हाँ, वही है एग्जैक्टली. हम्म, सही है. आपका भी होगा. अभी तो होपफुली स्टार्ट हुआ है ना. अभी तो स्टार्ट तो ही हुआ है स्टार्ट हुआ है. हाँ हाँ so तो like वो भी एक I am to some extent very chilled about making it a part of me is like हाँ हो जाएगा चिल कर बंदे हो जाएगा. ठीक है because it's also that क्योंकि अब इतने टाइम से कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं तो आई हैव एन आइडिया ऑफ हाउ थिंग्स वर्क like I'm not starting very naive like I don't या understand algorithms I don't बस understand how स्टार्ट कर दिया. content एक works यूट्यूब का शौक था, ऐसे नहीं हाँ स्टार्ट ऐसे किया नहीं ये. पता है हाँ, like I know how to track things क्या काम कर रहा है क्या काम नहीं कर रहा है अंडरस्टैंडिंग रिटेंशन रेट एंड ऑल तो वो चीजें समझ आती है जो टेक्निकल पार्ट में समझ आती है तो इट डजंट आई डोंट फील डम व्हेन आई डू दिस आई एम लाइक आई नो ट्रू. हो जाएगा टाइम लग सकता है बट हो जाएगा हो जाएगा डेफिनेटली. दैट्स एंड आई थिंक सो यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स सॉर्टेड. तो मेरे टू को सम एक्सटेंट yeah, टू to सम some extent, of course. हाँ हाँ And that's why you are not that you know what, fame hungry sort of कि भाई हाँ मेरे हाँ को तो 6 महीने में 2,000 या हम्म 3,000 फॉलोवर चाहिए. You know that when the हाँ right audience will find you, हम्म you will have that thing. हम्म और एक दिन में वो नहीं मिलेगा. हम्म तो यू हैव दैट थिंग सॉर्टेड. नहीं तो हम्म बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे भी देखा है दैट दे हैव स्टार्टेड यूट्यूब. वो फेम के लिए स्टार्ट किया है, हाँ हाँ मेरे हाँ को दिखना है. हाँ But they don't have that back knowledge of how to start or when to start या or how to be patient about things. हम्म बस उनको ऐसा है कि इनके 2 लाख फॉलोअर है, मेरे भी हो हाँ जाने चाहिए. आई एम मेकिंग मेरे द को सेम कंटेंट. हाँ ऐसा बट थोड़ी यू होता है आर मेकिंग द सेम कंटेंट, बट हाँ दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम इज. यू आर मेकिंग सेम कंटेंट, यू सेम आर कॉपिंग देम रादर देन हाँ बीइंग योरसेल्फ. या तो ऐसा चीजें होती है. एंड या व्हेन यू टोल्ड मी अबाउट द पॉडकास्ट, आई वाज लाइक दिस इज समथिंग. मेरा फर्स्ट माइंड में आया था दैट दिस इज समथिंग आदित्य सूट्स. आदित्य को बातें करनी बहुत पसंद है. आदित्य हाँ शुड डू समथिंग लाइक दैट. Yeah, even Varsha said the same thing, bro. हाँ. हाँ Because we have seen you, we have हाँ worked with हाँ you, we have seen you, and हाँ you love talking about everything. everything कुछ भी हो, कुछ it's भी like personal हो, professional हो, प्रोफेशनल हो या छोटी मोटी बातें हो, it's like हाँ anything, you love to have conversations. हाँ
So like even when I So did, it didn't seem like a very hard effort कि ये कैसे होगा, but like हाँ बात ही तो करनी है. So you don't like have that awkward pauses हाँ हाँ. कि हाँ यार इसके बाद क्या बात करूंगा. You don't have that. And like anything, it's also that I've also accepted silences. Like अगर conversation में if kind of seems like एक silence हो गया, so I'm not in the phase like अब क्या करें अब क्या करें. I'm like ठीक है. I started appreciating silence in conversations. Like Yeah, I've always been honestly कि हाँ बात अगर कभी कभी होता है you just kind of naturally comes to an end to a conversation. तो वो chill है. yeah, अगर हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है. And sometimes I have a silence. I wait for 10 seconds. And then I think of something. अगर आया तो ठीक है, नहीं तो other person will ask. Or maybe yeah, I'll exactly. start, maybe I'll do some small talk. Always हो works. जाएगा. Like Yeah, हाँ, always work. like one So thing like about you, go on, go on. yes, yes, gone, gone. जाओ जाओ जाओ. जा आपकी बारी. जापी वाली. So like with conversation, something that I've realized that it's also kind of works in a lot of phases. कि मान लो if you want to approach to someone, like you ask, if I had to ask girl out on a date or maybe just हाँ, ask her number, one thing that I've kind of come to a realization is that कि except rejection, everything else is trial and error. yeah, true. हाँ Very हाँ. much true. You And can't just take that rejection and go on with your life. You हाँ उसके can't. हाँ You उसके really वजह can't. से ट्रायल एंड एरर है ना बोल दिया तो ठीक है like ठीक है. every time Next that time. in my head I'm like वो मुन्ना भाई देखी है मुन्ना भाई हाँ, of उसमें course. मुन्ना भाई में भी उसमें when he made it to the hospital and he meets I think a patient who I think a young guy who's in love with a girl and is Yeah, hospitalized and he tells him a song like he tells a story through a song at the end of yeah. the song he says like शादी हो जाती है तो बंदा पूछता है अब क्या अब बोलता है क्या? कि दूसरे दिन मोहल्ले में ऐश्वर्या आई हाँ. so So like like we that's how move on life. with that हाँ. हाँ ठीक है, तो तू chill नहीं है कोई हाँ और आएगी. राइट या हाँ तो फिर मैं 2 डंबल मार के ज्यादा आऊंगा फिर देखना. चिल है हाँ तो वही है So it's like amazing. हाँ, that's how you should have a mentality. Because अगर आप एक जगह पे stuck हो जाते हो ना, not even in like this kind of thing rejections, but even like interviews ले लो. If you get rejected, it's okay. हम्म, Maybe learn from that. हाँ obviously हाँ learn from that Recently I have my brother is having some interviews and 2 3 interviews it didn't go well and he हम्म, got rejected. I'm like it's okay, you are learning things. This was a first interview, हाँ you did well, you did well than what you expected. It's okay if they don't want to give job, fine, not an issue, they fine will find a better person. fine हाँ But you should learn from it. You just don't stuck at that thing. मेरे को इन्होंने reject कर दिया, what should I do, what should I, just learn from it and go on. दूसरा company try करो, तीसरा company try करो. yeah That's how you and go on. and also like one thing that people don't realize it with like have you played chess Yeah, so you get the game like people don't realize that sometimes you just need one move to work yeah. हाँ एक मूव से पूरा गेम चेंज हो That जाता है पीपल डोंट गेट one लाइक हाँ perfect हाँ move और हाँ वो तुम्हें स्टार्टिंग से नहीं मिलेगा. या वो स्टार्टिंग से चार नहीं बार मिलेगा मरोगे ना, तुम्हारा तब मिल 4 जाएगा वो हाँ पैदा या हाँ सिपाही हाँ मरेगा, हाँ तुम्हारा तो हाथी you'll मरेगा, तब you'll तुम्हें get there रियलाइज होगा then दैट you'll get कि दिस हाँ इज माय मूव. then you have to think about the move then you can't just think of one move you have to think of the second or the third in या, advance so like that is something if you play chess to kind of helps कि हेल्प्स 100 अगर गलतियां हुई है you just need one thing sometimes to kind of make over मेक ओवर. या, हाँ तो some आई like नेवर अंडरस्टैंड द चेस रूल ना, बाय द वे. वो कभी बचपन में जब चेस खेलती थी ना, आई वाज लाइक जस्ट प्लेइंग विद द थिंग, बट आई नेवर अंडरस्टैंड द रूल ऑफ चेक्स एंड मेट. लाइक व्हाट हाँ इज दैट, आई वाज जस्ट गोइंग विद द फ्लो, बट दैट्स हाउ आई लर्न कि हाँ ठीक है भाई, ये चेक और मेट ऐसे होता है. हाँ यहाँ से तुम इसको रानी को ऐसे मूव कर सकते हो, या तो फिर घोड़े को ऐसे मूव कर सकते हो. दैट्स हाउ यू लर्न, दैट्स हाउ द ट्रायल एंड एरर वर्क्स. yeah trial works वही है and also like you were saying about the fame right like something just came in the mind like with the fame like I don't look down on people who says like मेरे को fame चाहिए YouTube पे I'm like cool या या, डेफिनेटली. cool but like then something that I learned about goals like very recently as today okay कि like I've been doing something for a while now ठीक है या 1.5 years around 2 साल हो गए इस चीज को and when I started with a some reason ठीक है like I kind of it's about I kind of started to fill a void and that void is filled now and I've been struggling to keep at it for a week or two now तो मेरे को समझ नहीं आता कि प्रॉब्लम क्या है कि like why I'm not like I'm usually consistent at a lot of things या usually so I'm like it's also like an identity crash to me I'm like
भाई जो बंदा 2 साल से बिना ब्रेक के वो किए जा रहा है एंड सडनली आई एम नॉट एबल टू डू इट फॉर 2 वीक्स, हमें वो समझ नहीं आ रहा व्हाट्स द प्रॉब्लम। ठीक है, सो आई काइंड ऑफ फिगर आउट कि प्रॉब्लम क्या है टुडे इन द मॉर्निंग, लाइक आई स्टार्टेड टू fill a void, that void is filled now. So my meaning is kind of fulfilled. So if I need to keep doing that, I need to kind of find Take a a break. better, like maybe take a break or maybe find a better meaning. New Like motivation to keep that going. हाँ, motivation One I goal don't is go. reached, you हाँ need to I make another goal to start doing it. हम्म, If I'm getting it right. हाँ, on the same page, like, but I don't personally go with motivation. I'm Okay. at a place that कि motivation लेके फायदा नहीं है. It's like गाड़ी बंद है उसको धक्का मार रहे हो, बार बार आप धक्का मारने जाओगे तो वो फायदा नहीं है. नहीं अब यार नहीं. like it's also effect of listening to Jordan Peterson. You know Jordan Peterson? Uh, no. So he's a clinically Canadian clinically psychologist who's like अच्छा. very, he's kind of famous about his views towards life and about how you can make your life better. And one of the things that he says that having meaning and responsibilities in your life makes worth living, because Yeah. there's so many problems that you have, and there's usually more suffering in life than there's happiness. That's the Yeah. kind of the order of living is, and having Living some is. responsibility and meaning kind of helps it. So and yes, देखो ये भी वो भी एक kind of rat race है, that you move from one goal to another, which I get. So I pick things very clearly. This is something very close to me. Like honestly, it's gymming. Honestly, okay, I started like Okay. at 2021, so I always enjoyed like gym. Yeah. So, but I started to kind of fill a void, and now that void is filled, and I don't Filled. हाँ. know how to. क्योंकि 2 साल में first time I never had the answer to why I'm doing this. Yeah. ठीक है, 2 साल से मेरे को क्लैरिटी थी कि व्हाई आई एम डूइंग दिस, और ये 1 महीने पहले आई आस्क्ड माय सेल्फ व्हाई आई एम गोइंग टू जिम, आई डिडंट हैव एन आंसर, एंड इट फेल्ट like an attack on my identity, because I've been doing this. Like last week I took the first break of going to gym, from going to gym. Oh. 2 साल में पहला बार ब्रेक लिया, बिकॉज ऑफ लाइक जस्ट बीइंग पर्सनली कि एक हफ्ता ब्रेक लेते हैं, अदर मे बी कहीं जाना पड़ा, या मे बी बिकॉज ऑफ सम रीजन आई कुडंट गो टू जिम, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. द फर्स्ट टाइम Okay. आई वॉलंटरली टेक कि अच्छा एक हफ्ता You took ब्रेक a लेते break. हैं. हाँ. हाँ, तो टू फिगर आउट शिट लाइक व्हाई आई एम Why I'm काइंड ऑफ doing. struggling with consistency, which has never been the case since I've joined. तो अब मेरे को आज सुबह रियलाइज हुआ कि it's not about that I'm not capable of being consistent. It's just I have to find a meaning that is Yeah. bigger and more deeper than before. Like I started gym because I wanted to be like get a healthy living, and healthy living was the first biggest choice. But वो achieve हो गया. This is achieved. Now why should I continue? So it was like to keep myself having that healthy life, because life itna having this is called a fast paced life. There is a Hmm. lot of things going on. तो एक मेरे को Yeah. एक goal दूसरा मिल गया, that I need to keep this thing. This has become a Hmm. good habit in myself. हाँ. It has become a routine. So I don't want to break this routine and add some bad thing in it. हाँ. So Makes that's why sense. I am going. So you just हाँ. can see this. I have a friend. He also goes to gym, and like you said, he has been doing gym since, I guess, if I'm not wrong, 11th or 12th or first year of college. Like it's been Okay. 4 years, if I'm not wrong. Okay. But 4 years, he started it just as fun. Like everyone goes to gym, I want to go to gym. But Hmm. now he has got a goal of making a body, like a Okay. weightlifter हाँ body. हाँ. Okay. So that's what his another goal is. Hmm. So he's working on that कि मेरे को Yeah. एक body चाहिए weightlifter वाली. Yeah. So you also have to हाँ, figure find out that something. thing. हाँ. हाँ, figure out something कि why do you need this now? Yeah. Yeah. You have My, got one goal. surprisingly, mine was not the health when I joined it. Okay. हाँ, लाइक वो तो मेरे लिस्ट में था भी नहीं कि हेल्थ हेल्थ के लिए बॉडी बनानी है. ठीक है, अच्छा. इट वाज लाइक व्हाट लाइक हाउ डू आई से दिस, जो भी रीजंस थे उस टाइम पर, लाइक हाँ. काइंड ऑफ बिट ऑफ चाइल्डिश, बिट ऑफ आई डोंट काइंड ऑफ regret, because when I joined gym, like my kind of social life was like a little fucked. Okay, Yeah, yeah. so I got it. Got it. I needed to kind of make it better. I thought that joining the gym might Gymming. help. Yeah. हाँ, तो I am at a place कि 2 साल हो गए. Now I'm good with social life. जो भी like it's limited, because I just realized कि सबको access देने का जरूरत नहीं जरूरत है. नहीं है. तो अब कम है, but it's better than before, and that void is filled. So like That is a social life is one of the satisfactory. reasons that why I did it. Or be reasons थे, but I'm like few things I think I don't want to keep off camera. But Yeah. the No. Definitely. uh, Definitely.
Off camera mean on YouTube. मेरे Maybe को I'll tell you पता later. चल गया, हाँ वो हाँ मेरे को पता हाँ चल sorry. गया. So that's the reason. तो अब वो void fill हो गया तो हम kind of trying. आज एक हफ्ता लगा तो आज figure out कि struggle क्यों है. अब एक हफ्ता स्ट्रगल क्यों लगे है. अब एक हफ्ता लग गया समझने में कि अब किया क्या जाए. So maybe I'll write 2-3 times a week and then we'll get there. So I'm chill. That's a great thing. At least हाँ you are questioning. When it happens that you just do it because it has been routine. रोज हाँ जाते हो, हाँ वो हाँ वो एक रूटीन हो गया. ब्रश करना हाँ is like a routine. उठ के पहले ब्रश करो. yeah This is what. But you have a thing you need that why. You are not wasting it. That shows that you want to use your time to the best. Like the best 24 hours का अच्छा use करना है. हाँ You are not doing it just essay. हाँ For तब भी me, I want हाँ a good healthy lifestyle. That's why I'm हम्म, keeping it. For you, हम्म, it can be something else. हाँ हेल्दी लाइफस्टाइल है ब्रो पर वो पहला that's not the thing that I think हाँ, first. I don't know why. Like it's always been the case. Lifestyle अच्छा हाँ जब सब पॉइंट बता देंगे ना तब कोई बंदा बोलेगा अच्छा हेल्दी भी रहना है तब मैं अच्छा हाँ हेल्दी भी रहना है healthy तो भी रहना है. हेल्दी भी रहना है that comes at the last so but हाँ No, I think so. मेरा थोड़ा जिम का क्या वो लॉकडाउन था. हम्म एंड लॉकडाउन में तो हम लोगों ने कुछ किया नहीं है. कुछ किया नहीं है सो आई जस्ट गॉट अ वेरी लेजी. लाइक मेरे को हाथ उठाने में भी बहुत आलस आती थी. एंड दैट्स व्हाई आई वाज लाइक आई नीड टू चेंज दैट होल इन्वायरमेंट हाँ to get more active yeah with my body. So हम्म I started gym. मेरे पास दो हम्म ऑप्शन थे, स्विमिंग का और जिम का. बट आई वाज लाइक स्विमिंग बाद में कभी, मम्मी ने ना बोल दिया. स्विमिंग बाद में कभी, जिम चलते हैं. मम्मी वाज लाइक हाँ जिम जाओ. every Indian mom ever No, but I have no but successfully made her हाँ realize that I need swimming. okay I want to do swimming and she has given me permission. that's great So that's a like win. that's great yeah Virtual high five. what's your virtual है नहीं सही है So yeah. सही अच्छा I have a question I don't know it will be inappropriate or not but I'm gonna still ask okay feel free to Okay. not answer uh, okay this question थोड़े टाइम से है मेरे दिमाग में I'm not able to particularly how to kind of articulate this question but I think only a girl or a woman can do justice to this question so I was thinking किसको पूछूं किसको नहीं पूछूं तो okay like this is so how do I keep it okay so it's we kind of agree that women gets more attention than men do. That can be Okay. kind of common agreement on the usual basis. सबको नहीं, हर कोई नहीं, but on the usual, ठीक है. You So do. Yeah. so when I understood attention, like the differences क्या है, तो one question that came into mind was like you a woman gets attention from so many men, but how they filter out that attention? That you get approached to in a room by three men. ठीक है, hey hi, how are you? I would like to get your number and all, whatever. ठीक है सो हम लाइक हाउ डू यू फिल्टर आउट की अटेंशन की कौन जेन्युइन है कोई बस ऐसे ही आया है एंड whom you don't want to give your time to and I never understand that thing कि वो होता कैसे like how do you figure out that कि if because even I kind of try to put you in your position I'm like I don't know how to do it and I've seen that some women make mistakes some women are good with it they just know how to किसको हाँ बोलना है किसको हाँ. बात नहीं करनी है किसी से टाटा बाय बाय ठीक है but maybe it's because it's been happening for a while now. It's usually women who are like 23, 24, 25 when they kind of seen that dating thing. तो उन्हें समझ आता है. But I've never understood the what are the kind of the criteria or maybe what's the foundation thing when you're like अच्छा इससे बात करनी इससे बात नहीं करनी. Have you ever thought of Yes, that? I have. Okay, Yes, go I on, have. go on. It's like you get that instinct, like हाँ, instant instinct. okay, जैसे कोई बात करने आता है ना, you just हाँ, get that what he is trying. I will just keep it as a he, what हाँ, he is trying to achieve. हम्म. So we get that But instinct. go on. Yes, I yes, go would, on, go on. I would say like it's 2023. How dare you assume he has his pronouns? Okay. Oh my God, I'm sorry. I'm chill, bro. Chill, bro. Okay, Go on. they, No, no. Go with they, hey, they go with whichever you want. Go whichever you want. No don't problem. want any backlash from the social No, media. I no, don't. no. Like we are. I'm more than happy to get on the kind of verge on being getting cancelled. It gets views. It gets. Right? वो Strategy I'll get on this negative thing in later. मैंने एक cool. story सुना था. Well, I'll just remind me again. हाँ, Okay, so getting in back, he or they, whatever you want to call it. cool. So yeah, so we Yeah. get that instinct. Like when Mm-hmm. you talk for the first time,
After Hmm. a while, yeah, like a 2-3 minutes, you get that person's Huh. intentions. Hmm. Like if this guy is like just want to be friend, more Hmm. than friend, or just a one night. हाँ. Simple. I will just keep Simple. it like that. हाँ, ठीक है. And to be honest, I won't say that we get it in the first go. Hmm. 19 साल की उम्र में या 17 साल की उम्र में तुम्हें नहीं पता चलेगा. हाँ. You won't. Makes sense. हाँ. Yeah, you Hmm. won't. But the time you spend with guy, like I have a friend. I have a Hmm. friend. I have a guy friend, like you or my other friends who are Hmm. guys. So I Hmm. know that I feel safe around you. Hmm. I feel safe with the conversations. Yeah. Like, so that's how I know. हाँ, That's how तो I know that if this is the same energy I'm getting from someone else, then I हाँ. can be friends with them. Them. Hmm. Yeah, or Hmm. it can happen like I have not been to bars or something, but Okay. and if you take an example of a bar, then there Hmm. are people who genuinely wants to interact with you and हाँ. this wants to be with, Whatever. like, Like you get it. we know what you're talking about. हाँ. We got it. Yeah. हाँ. So you just from their high or from their Behavior. behavior, Hmm. they will get it. If they just want to be genuine, they will be Hmm. more showing, like, Hmm. you will get this point. If you want something, Hmm. even a friendship, then you will be making the other person comfortable. हाँ. Yeah, you won't make them uncomfortable in the first go. हाँ. Doing So, something and creepy. Yeah. Yeah. you won't do something creepy, हाँ. like, and you will be, if you unintentionally do something, then you will Hmm. instantly apologize for that. The हाँ. other person won't do that, हाँ. because it doesn't matter to that person if they wants to keep it genuine or not. They Hmm. don't. First Hmm. is thing, they don't want to keep it. हाँ. So that's how we get it. And after 2-3 dates or after 2-3 Visit. interactions with Yeah. Yeah. people, we Get it. start getting that intuitions or vibes that Hmm. this guy is safe. Okay. This guy is safe. Okay. अच्छा, okay, a follow-up question. Okay, to that. Like when I now that I have conversations with guys about this thing, like मेरे को एक चीज समझ नहीं आती, like why men do it. See, if you wanna ask a girl out on a date, why do you trying to be friends with her? I don't need the I, like I'll, ha ha ha. I'll Go go. let me kind of elaborate on that. Like मैंने देखा है कि the interaction that you have as a friend and the interaction that you wanna have like kind trying to ask number is different. कि number Yeah. मांगना है या date like you wanna be friends with them. So I've seen so many men going like they will ask you to be like a friend. अब छह महीने तक friend है. ठीक है, it's been And six then months that अचानक से and then आए. you're like अचानक से I'm like भाई ये क्या है? अगर तेरे को पूछना है so like have the balls to just go on the first day. I'm like, I'm not asking you to do something creepy, but kind of keep the intent clear. Intent clear. Yeah, Intent exactly. clear Like रख. keep yourself clear that you are हाँ. interested in more हाँ. than friendship. हाँ. या दोस्ती नहीं करनी तो नहीं करनी, बुराई तो नहीं क्या, करनी. हाँ. नहीं करनी, कोई दिक्कत नहीं। सामने वाली मना ही करेगी ना ब्रो, लाइक नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, Yeah, आगे exactly. बढ़। हाँ तो 6 महीने बाद मिले या अच्छे में 6 मिनट में मिले. like you've been friends for 6 months and suddenly you think अच्छा एकदम से opening हो जाएगी, तो how do you expect, and then you blame the girl, okay she friend zoned me, Yeah, I'm like you exactly. didn't had the intent clear bro. Exactly. Yeah, Like the thing is, you don't understand how difficult it is for us. exactly. You are being friends with us, we are trusting you at a point, and then you हाँ come हाँ, out like boom. no, Like, don't do that. Just be clear with us. If हाँ, we even want to keep friendship after that, we will tell you that let's be friends, let's nothing be more, friends, nothing less. nothing more nothing less. But guys tend to fuck up that. I think so. The हाँ main mentality is like friends banenge, thodo jaan pehchan hogi. हाँ That girl हाँ will हाँ, also. like ऐसा नहीं होता है, but ऐसा में like, नहीं होता and है. I blame Shahrukh Khan solely for that. And I blame Shahrukh Khan solely for that. I Uh, agree. I agree, right? No, like Yeah. नहीं होता bro. And like it दोस्ती प्यार होता है. नहीं होता है. And नहीं also होता. like and also like it kind of accept, it kind of makes make being friends with a different gender like kind of hard, just in general, Yeah, right? Like apart, like people will around be like, oh you're dating, bro. We're not dating. We're just friends. It happens. it And just happens. and just go on. हाँ हाँ, go on, go on, go on. I'm like, when I was saying that, ki, I have an observation that why this happened, like why kind of suddenly जो चीजें change आती है. I think one of the reasons with I can give you a guy's perspective, not a girl's perspective, of course, for obvious reasons. So for obvious reasons, like I think usually what happens is like maybe in both that ki they don't have a clarity of what they want. Hmm. Like उन्हें उनकी बाउंड्री क्लियर नहीं है
कि you wanna be friend or you wanna ask her out. So like, and I think it happens with both maybe sometimes, and I don't know, it होता है, happens with both, right? happens. And see, sometimes it kind of, कुछ कुछ इंस्टेंसेस देखे हैं जहाँ पे द फ्रेंडशिप काइंड ऑफ नेचुरली ग्रोज इनटू दैट। कुछ कुछ होते हैं बहुत कम होते हैं, तो कम होते हैं बट होते हैं, बट लाइक द थिंग इज लाइक द गाय और द गर्ल समटाइम्स डोंट हैव द क्लियर बाउंड्रीज दैट ओके ये होना चाहिए या ये होना चाहिए। चाहिए So and like in also sometimes a lot of men is like they feel that ki, if I become friends, there's an opening, which is not the case honestly, not the case. and you will just end up It's wasting. actually bad. It's actually It's the honestly worst bad. kind of thinking if you think. हाँ Like, yeah, we are trusting you with something. एक तो yeah. है ट्रस्ट इश्यूज पहले से, एक तो है एड्रेस तुम यूज उसमें पहले से। ऐड कर रहे हो. हाँ हाँ उसमें ऐड कर रहे हो So हाँ। it's and then it makes difficult for us. फिर हाँ हम लोग ना वो बोलते कि men all men are same. Then all you all men get offended कि और you सब are get same है. offended But हाँ we have gone through that हाँ phase. Like we have हाँ met 5 people, 4 out of हम्म, them have come like that. हाँ एक बंदा अलग है, हम खुद हाँ मानते हैं. We, हाँ we just say that all men are हम्म, same, but हमें भी पता है कि अलग होते हैं. हम्म, But वो एक general perspective बन जाता है. हाँ हाँ जनरल पर्सपेक्टिव बन You जाता है। count that 90% person, हम्म you give that 90% more importance than 10%. हम्म क्योंकि तुम्हें मिले ही 90% है, 10% तो मिले ही नहीं है तुम्हें. दस वाले तो मिले ही नहीं है। सही बात है लाइक so and also one thing ठीक है it happened with me personally like it also depends with which phase you are in life ठीक है it also like sometimes in your head you are clear कि अभी चाहिए ही नहीं नहीं चाहिए, like नहीं you चाहिए, टाइम डेफिनेटली. नहीं है और अभी एफर्ट डालना ही नहीं है then even if you meet someone in your head like that thought doesn't come that has been a या personal observation like ये होता ही नहीं है you are always chill कि like even someone asks you out and even you have a conversation with someone in your head is like I'm नहीं है, chill I'm just trying to be क्लियर. हाँ. friends एंड हाँ दैट्स द थिंग विद मी राइट नाउ. अभी भी मेरे को कोई आएगा, आई विल बी लाइक नो. Even if I'm interested, I will be like, no, not हाँ now. I am not that much emotionally available, हाँ or you हाँ can say I don't have that time. I need हम्म, time to focus on myself first rather than हम्म, giving you the time. cool So ऐसा होता है. You know, हाँ you are clear in that phase, and हाँ this phase is like 2023. Either you are running, either हाँ you are running for something like that, or हाँ either you have got that mindset कि हम्म, अभी I have time for those things. हाँ Growth is important. हम्म, It's like that. हम्म, और आई गेस जो मैं बोल रही हूँ ना, 90% पीपल हम्म, दे हैव द फर्स्ट थिंग, यू आर रनिंग हम्म, फॉर दैट. बस मेरे को चाहिए, हाँ मेरे को चाहिए मेरे कैसा को. भी मिले अच्छा हो बुरा हो वो बस चाहिए हाँ मेरे को चाहिए and also I think to some extent वो भी important है to kind of हाँ, इम्पोर्टेंट है. figure out कि maybe कि तुम्हारी boundaries है क्या हाँ, like suddenly when you accept everything that you then you don't know what you want ठीक है and then you kind of get hurt and then you realize कि ये चीजें नहीं चाहिए नहीं चाहिए if थी. I'm gonna spend time I can't be with someone who has no self respect or maybe has no ambition in some extent maybe whatever you wanna have ठीक है तो you kind of make that filters कि हाँ अच्छा वो क्लैरिटी ऑफ देयर ओन हाँ लाइफ, हाँ कि अब ब्रो like I'm और gonna खुद spend की लाइफ. हाँ, हाँ एंड हाँ एग्जैक्टली. if I'm यू gonna give कैन. हाँ, यू कैन वो दोनों इंटरेक्ट. इट्स ओके. it's okay cool cool Yeah. So like, yeah if this person is not Mhm, clear of their own life, तो mhm. what about us? तो वो us का क्वेश्चन मार्क रह जाता है. Ask हाँ वही है so like so I have kind of been able to kind of filter that thing out for myself to some extent I don't expect like bro 20s में सब figure out कर रखा है हाँ भाई ना, भाई हाँ नहीं वो गहरी भी लाइफ ही नहीं है. वो लाइफ ही नहीं है नहीं गहरी भी बना रखा है भाई सब पता है वो नहीं है but हाँ I think it's definitely a start in the 20s I think if you kind of filter out it makes everything so easy and I'll tell you and why it's important like something that I've learned, I find very it may kind of made sense to me. There's a creator called Prakhar Ki Parvachan. Have you kind of heard his नेम name? रिपीट रिपीट करना. Prakhar Ki Parvachan YouTube channel है content creator या है या या never. या You या know? या अच्छा I अच्छा haven't, I have known his name, I haven't okay seen his video, but cool heard from people. okay cool. So that guy talks about something that if you basically बोलते हैं कि अगर तुम्हारा घर strong है ना so you can take the fight for the whole world. Like when you don't have issues in your home with your family in general that you come home and you're peaceful you come home and you're like हाँ भाई मेरा relationship sorted है with my parents with my partner with my kids with my siblings whatever you want to pick वहां पे तुम चिल्लो like that's where you're peaceful then you're like कि हाँ अब जो energy I can spend out there building something that is Building bigger than something. my something so that's also very important to figure out that shit
कि like Yeah. भाई नहीं चाहिए, and like but it's also fun to watch sometimes that I see guys do some fuck up shit, and it sounds mean, but I still call it sometimes. If they do fuck up things, then the guys like me who kind of gets it, not everything, makes the stage better for us. I didn't get you. Didn't get it. Sorry. I'm saying like sometimes a guy will fuck up, Ah. ठीक है, the girl is pissed, so they kind of them fucking up sets the stage for someone like me who kind of gets this shit Okay. and Yeah. take Yeah. the advantage. You know, like I'm a believer, bro. If you have an advantage, you should take it. Don't apologize. Of course. Of course. If that So, person is you are trying to हाँ, get, that's bro, like that is such a good thing. I'm you like, should go why for it. you should go for it. कंधा Yeah. बनो बंदी का. हाँ भाई, देखा है. Like That's हाँ. what male. Just a joke, but that's what male friends are for. Arey, you never know, bro. Yo, that's my wingman, huh? Like unasked wingman, haha. Sometimes, yeah. Unasked. Unasked wingman. No. Hmm. That's Wait, great. also like men do a lot with that shit. They just देखा है कि अगर you tell a boy कि भाई ये interested है, he will do everything to kind of set you both up. तो Yeah, उसका that's मजाक true. उड़ा ले, हाँ, that is something I like I've seen about that. men. I've seen that. That is good. हाँ. बट सही है. लाइक दिस इज मेल बॉन्डिंग का ये भी एक बड़ा सही सा फंडा है दैट हाँ भाई के लिए कुछ भी करेगा. भाई गिरे, हाँ. हाँ, रात को बुला लो बंदे का कहाँ घर तोड़वाएगा. बस ये घर टुलवाएगा, अरे वो लाइक उसमें सोनू की टीटो की सीटी की फिल्म ही उसमें बनी हुई है, नहीं? अरे अरे भाई. हाँ सही में. हाँ. पर तुम लोगों को पता एंड इवन आई थिंक सो तुम लोगों को भी पता चल जाता है दैट सामने वाली इज लाइक रियल और नॉट. हम्म. I won't say that the partner would get it, but हम्म. partner के दोस्त को like if your friend is in a relationship तो हम्म. ते आपको समझ आएगा. हम्म. You will get that कि ये कटने वाला है या नहीं. You will get that thing. ये So बिल्कुल this is what with it. This is what is with us. हाँ. हमें समझ आ जाता है. अच्छा. हाँ खुद के लिए समझ आ जाता खुद के लिए समझ आ जाता है. cool. है. समझे. हाँ, cool. आपका हो गया क्वेश्चन क्लियर फर्स्ट हाँ वाला. हाँ, क्वेश्चन तो क्लियर है. स्टार्ट किया था. हाँ, जहाँ से स्टार्ट किया था, लाइक कॉन्वर्सेशन की ये अच्छी बात है, कहीं से स्टार्ट करो खत्म कहीं पे होता है, इट नीड्स टू बी स्पॉन्टेनियस. एग्जैक्टली. हाँ. बट यही कुछ ऐसी चीज है दैट हाउ यू अंडरस्टैंड पीपल. लोगों को पहचानना. हम्म. दैट्स व्हाट यू कॉल. हाँ. सो वो ऐसे सही ही में. होता है. हम्म. ट्रायल एंड एरर इसमें भी. और इंडियन पेरेंट्स के वर्ड में परखना. परखना. परखना, हाँ. लोगों को परखना. लोगों कौन तुम्हारा उपयोग करने आया है और हाँ. कौन तुम्हारा साथ दे. सारे रामायण कैसा रहे ब्रो? बाबूराम जी ने रामायण देखा है? हिंदी बेहतर हुई है. अरे बेहतर हुई कुछ तो है. एटलीस्ट बेहतर हुआ. हाँ, कुछ तो अच्छा हुआ. हिंदी तो बहुत गंदी थी मेरी. एंड ऑल्सो लाइक आई थिंक ना हिंदी के साथ क्या है ना, मेजोरिटी लोगों की स्ट्रीट लैंग्वेज है. हाँ. आगे भाई लाइक ए भाई भाई चल रहा लोग. है, ये हो गया भाई लोग, लाइक प्रॉपर हिंदी बहुत कम लोगों की है. एंड द प्रॉपर लोग तो हिंदी सुन, यू विल लिसन टू द हिंदी एंड लाइक भाई ऐसा भी होता है क्या हिंदी? कभी देखो करोड़पति. कौन बनेगा करोड़पति. हाँ. आधी हिंदी तुम्हारी वही सुधर जाएगी. तुम्हारा जीक्यू आईक्यू सुधरे ना सुधरे तुम्हारा जी हिंदी सुधर जाएगा. हिंदी सुधर जाएगा, हाँ. नहीं like, पहले देखे थे यार, अब नहीं, अब मन नहीं करता लाइक करोड़पति देखने का, अब बोरिंग लगता है. आई यार थिंक वही. यूजुअली बिकॉज नेटफ्लिक्स वगैरह आ गया है तो अब एक्सेस आ गया. हाँ वो भी है. एंड हम्म. आई थिंक सो लाइक एक क्या नया नया आता है ना तो तुम्हें सब अच्छा लगता है. हाँ वो बच्चों को हाँ नया खिलौना दे दो तो वो एक दो महीने हाँ. खेलेगा फिर फेंक देगा. अब जब उसके 15 सीजन आ जाए तब अच्छा नहीं लगता है. तब अच्छा नहीं लगता. तो सेम इज हाँ. हैपनिंग बट होता है. यू हैव फाइंड समथिंग बेटर देन दैट. I think that's what like Hollywood sitcoms had gotten better than Indian ones. या. कि like Friends के 10 सीजन बना लो, फिर उसे बंद कर लो. Like हाँ. there's beauty in when things end, which एंड is not the case with like तारक मेहता. कितने एपिसोड्स हो गए पता भी नहीं है. एंड नाउ द थिंग इज दैट इवन द कंटेंट क्रिएटर शुड रियलाइज दैट भाई अभी ना कोई नहीं देखता. आपको और कोई देखता है लिटरली इन माय हाउस वी सी. बट किसके लिए पता है वो बैकग्राउंड साउंड के. हाँ कुछ बैकग्राउंड में चलना चाहिए बिकॉज माय अच्छा अच्छा, फैमिली हाँ. पापा लोग ओह आते हैं ना गॉट घर इट. पे तो दे नीड अ बैकग्राउंड साउंड. हाँ हाँ गॉट तो इट. वो चलता है एंड दैट इज नॉट इवन लिसनिंग टू दैट थिंग. हाँ. तो मतलब एक पॉइंट पे यू शुड रियलाइज दैट दिस इज अ लिमिट. फिर हम्म. ज्यादा ओवरडोज हो जाता है ना तब तुम्हारा मन नहीं लगता. हम्म. वो तो है.
Talking of Tarak Mehta, I have to like कितने दिन से एक क्वेश्चन पूछना था. बोलो. How annoying it gets for you when people ask you भाई जलेबी फाफड़ा खाया या नहीं? When people who are not from Gujarat, when people are not Gujarati, so annoying, right? You have like categorized Gujarat With into जलेबी Jalebi फाफड़ा Fafda, और Jethalal, and जेठालाल गबरा. Ambani. हाँ अंबानी एंड रैस गबरा नहीं क्या क्या Garba, Garba. गरबा गरबा सॉरी गरबा हाँ Yeah, Garba. लाइक हाँ Sorry, I हाँ forgot it. yeah like I can imagine it gets so annoying na sometimes कि भाई It like gets. I remember the first conversation that we had. I started with like came to word, right? Ha, came to. Honestly, I did on intention, by the way. Like this is something that I've learned. अगर if you can pull off, do try. Meet someone from like maybe Punjabi and anything. जो भी best stereotypes है ना उनके use that I do that. and I started the conversation, then make a joke of yourself for using I do that. that. हाँ I do that. it makes the I have a friend. conversation better so much easier. Like remember कि like हमारी दोस्ती 5 मिनट में हो गई थी. Ha. Remember like just because I can होता क्या है कि usually I can make joke for myself. You're like हाँ then you get pissed for a second. You're like भाई ये भी वही बोलेगा and then you make jokes. You kind of get released. कि हाँ भाई बातचीत हो सकती है. हाँ go on say. I have a friend. I have a हम्म, friend who is Bengali, and I am हाँ like, I make all those jokes on him, all those, and he's like, "बंद कर दे तो Bengalis को रसगुल्ला बनाना." I'm like, "It's रसगुल्ला," and he's like, रसगुल्ला. "थप्पड़ पड़ जाएगा तेरे को अभी." But it's fun. Like हाँ that's it's how fun. you. हाँ It's fun. और like ऐसे जब दोस्ती भी ज्यादा होती है अच्छी. हाँ वो तो है. So yeah. दोस्त the better you roast, the better the friendship becomes. Yeah. And जब खुद का रोस्ट करो तो सामने वाले को बहुत मजा आता है. हाँ, if you can pull that off, that's a really great phone. Like, Arey, yesterday I was like watching Instagram reel and hmm, the first post that hmm, Instagram reel नहीं but मैंने Insta भी खोला ही है and the first post is that Dhoni and Chennai Super Kings team tasted jalebi fafda at अच्छा, Gujarat. I was गुजरात. like बंदा 1000 बार आ गया बंदे ने 1000 बार खा लिया अब तो इसको हेडलाइन बनाना बंद कर दो. और और कितने सारी चीजें होंगी खाने को जो apart from stereotypes. There are a lot of things. You मेरे को एक नाम बताओ what are the Gujarati dish that comes to your mind? ढोकला बस खत्म. Chatam and jalebi fafda. मेरी मामा खत्म खत्म. There are a lot So many things, right? Food is so more than undiscovered. that. हाँ, Yeah. मतलब मेरे को खुद नहीं पता मेरे को भी खुद इतना नहीं पता हाँ, बट देयर इज लॉट मोर देन थिंग्स तो मतलब मेरे को लगता है कि कभी यू आर इंटरेस्टेड यू आर हाँ, मेकिंग हाँ, दोस डो एक तो हाँ, ढोकला का मीनिंग आई एम कमिंग टू दिस टॉपिक दिस इज माय फेवरेट वन तुम हाँ. लोगों को ढोकला का मीनिंग नहीं पता फर्स्ट अच्छा ठीक है क्या होता हाँ बताओ यार. तुम सब लोग ढोकला ना किसी अलग ही चीज को बोलते हो लाइक ओके. तुम लोग खमन ढोकला बोलते हो ना जो ढोकला हाँ इट इज मेड ऑफ चना का दाल इट ठीक इज है ऑफ चना राइट ठीक है वो हाँ. खमन होता है फर्स्ट थिंग अच्छा ओके. खमन तुम लोग खमन खमन ढोकला बोलते हो पर उसको खमन खमन ढोकला. बोलते हैं अच्छा और हाँ जो ढोकला होता है वो हाँ व्हीट के बैटर का बनता है ठीक है इट्स फ्रॉम व्हीट बैटर और वो ठीक है. व्हाइट और या तो फिर हल्दी डालो तो येलो कलर का होता है ओके. और दोनों में बहुत डिफरेंस है हाँ अच्छा. बहुत डिफरेंस बहुत एक को डिफरेंस है. फर्मेंट करके बनाते हैं और एक को नॉर्मली बना या देते हैं या तो मतलब एक तो यार खमण बोलो तुम लोग हाँ बोलते हो ढोकला और मेरा ढोकला. दिमाग मेरा बीइंग गुजराती एंड हाँ. लर्निंग हैविंग बीन इन गुजरात हम्म, तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन जाएगा वो व्हीट वाला हाँ और तुम कहना चाहते हो वो चना वाला तो हाँ बहुत अनॉय करता है बहुत अनॉय एक तो करता है. और एक तो तुम लोग मानने के लिए रेडी नहीं हो कि रेडी नहीं दोनों होगी. अलग है हाँ जो बंदा गुजरात से है वो बता रहा है तो लाइक नहीं भाई भाई तू ही गलत बोल रहा होगा. हाँ भाई मैं अब कितने 21 साल से हूँ गुजरात में हाँ बॉर्न अ गुजराती आई एम अ गुजराती हाँ नाश्ते में वो खाती हूँ भाई अब तो मेरी बात यकीन कर पर नहीं संजीव कपूर ने बोला है कि ढोकला इज दिस तो ढोकला इज ढोकला is दिस this. हाँ. But that's how. अलग है And also like kind of teaches you कि इंडिया में कंटेंट कितना लाइक लोगों का नैरेटिव ड्राइव करता है राइट. अरे बहुत लाइक नाउ I feel sometimes I feel so sad that like कि जेठालाल और दया के अलावा मेरे को ज्यादा पता ही नहीं गुजरात के बारे में. And until unless I met Varsha, even I didn't have much knowledge of kind of Indian South Indian culture, साउथ right? इंडियन या Like she tells things like अच्छा ऐसा भी होता है like okay. हाँ लाइक मेरा साउथ इंडिया का नॉलेज कहाँ खत्म हो गया पता है इडली हाँ और डोसा पे bro. बस खत्म दैट्स Yeah, द लास्ट थिंग that's the last thing, फर्स्ट bro. थिंग आई नो
साउथ इंडिया, अच्छा वो इडली डोसा वाले। I did bro. Like we are, I am feeling so happy that we are constantly on the edge of getting cancelled out, bro. Like, yeah, फिर हम बोल सकते हैं ना कि हमारा कैंसल, वी गॉट कैंसल्ड फॉर दिस। cancel, bro. Like cancel, bro. हाँ. Like हम लोगों को ऑफेंड करने में मजा तो आता है, झूठ बोल, मजा और तो आता है। ऑफेंड भी क्यों होते हो यार, बात तो सही है, बंदे का बात पर्सपेक्टिव देखो तुम। हाँ, बात तो सही है। पर्सपेक्टिव अलग है, पर नहीं, द थिंग इज दैट यू वांट पीपल टू गेट इनटू योर पर्सपेक्टिव, हाँ यू हाँ डोंट वांट टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सनस हाँ पर्सपेक्टिव, हाँ। इसलिए Also, तुम कैंसिल। also like और दिए भी तो वैसे ही ना, गोवा में वो एक बंदा था जो कार में मिला था, he had long ass name, खत्म ही नहीं हो रहा नाम। आदि एंड द अदर गाय just left off the car, वो एक है। एक और है, अय्यर है फ्रॉम तारक मेहता, उसका भी वही लाइक दो ही दिए हैं जो मेजरली है, हाँ, कॉन्टेक्स्ट भी कम है। ऑल्सो अभी जाकर थोड़ा लाइक विद शॉर्ट मूविंग्स कमिंग आउट, पीपल आर गेटिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कल्चर, तो विच इज ग्रेट। हाँ, बट ऑल्सो आई हैवंट मेट अ सिंगल पंजाबी गाय हु डोंट ड्रिंक। हु डोंट ड्रिंक। हाँ, तो वो स्टीरियोटाइप अभी तक नहीं टूटा है मेरा। मैं पंजाबी को ही नहीं मिले तो कितना ड्रिंक की बात कर रहे हैं। नो लाइक, I haven't- no, like if you should meet bro, like अभी तक that they have a stereotype कि या तो ट्रक चला रहे हैं या तो पी रहे हाँ हैं। यही स्टेरियोटाइप है। मैंने दोनों स्टेरियोटाइप देखे हैं, लाइक किसी किसी में ट्रक वाली स्टेरियोटाइप नहीं है, पर ड्रिंकिंग वाला अभी तक नहीं देखा है। है, मेरा है। मेरी दोस्त है, वो इज अ पंजाबी फैम नॉट हम्म। एंड शी हैज स्टॉप्ड राइट नाउ, बट ओके। होता है, होता यहाँ है। पे गुजरात में वो कल्चर ही नहीं गुजरात में है। कल्चर नहीं ड्राई स्टेट है। है, ड्राई स्टेट। तो यहाँ के पंजाबी शायद ऐसे हो सकते हैं जो ड्रिंक ना करे। आई डोंट नो ब्रो, आई डोंट नो, I- you can get things in black, you never know। सबसे ज्यादा बिकता है, सबसे ज्यादा बिकता है ब्रो। या सोच यू ले, नेवर नो। यू यू नेवर नेवर नो। नो, यू ओके नाउ दिस इज नॉट, दिस शुड नॉट, दिस शुड नॉट बी ऑन यूट्यूब। No, it will be, of course. It will क्या be. कैंसिल करवा रहा है यार, तेरे को ज्यादा बनाना है अभी। नहीं नहीं bro, like I had this joke, I was like, uh, should I tell this or not, दिमाग में था, like if any point you will ask me that, hey Aditya, why did you invite me, I was like mainly for the views। अरे तू पहले तो, आई वाज नॉट गोना आस्क बिकॉज़ आई न्यू द आंसर, I'm like okay okay। न्यू द आंसर, फिर हाँ, पूछने की क्या जरूरत है। करने की बट क्या होता है, जरूरत, बट होता होता है, है, होता है। तो है, बट आई नॉट वाज लाइक। लाइक, हाँ हाँ। मैं सोच रही थी कि इसने मेरे को कांटेक्ट क्यों किया, फिर I'm मेरे like को then you're रियलाइज like हुआ oh कि अच्छा, views, to views get चाहिए। व्यूज, कुछ हाँ तो यार, मिलेगा। कुछ तो मिलेगा ब्रो। हाँ यार। सोचा था सज धज के बैठे थे, फिर सोचा हम चलना नहीं है यार, नहीं इतना नहीं कौन नहीं करे। नहीं, इतना कौन करेगा। हाँ हाँ, ठीक है, लाइक हाँ ऑल्सो, like अब से next time that I'm gonna have a conversation with you over an episode, I think I'm not gonna prepare even a bit, like next time, like हाँ बस बैठो, रिकॉर्डिंग ऑन कर दो, चालू हो जाओ। जो भी होगा वो हो जाएगा, हाँ देख हाँ लेंगे। हाँ, अभी तक जितने लोगों से भी गेस्ट से बात हुई है, द लाइक व्हाट आई डू लाइक कि कॉन्वर्सेशन जितनी इजी हो जितनी अच्छी है। अब नेक्स्ट टाइम लाइक इफ आई टॉक टू आशीर्वाद, इफ आई टॉक टू सिद्धार्थ, इन द नेक्स्ट इन माय हेड आई एम लाइक अब प्रिपेयर करने की जरूरत पता नहीं चला है। ही आया, हाँ, हाँ हाँ, दैट बात हो व्हाट आर द जाएगी। टॉपिक्स, हाँ। हाँ, वो रिदम बैठ जाएगी। हाँ, यस यस यस, वही एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली। और अच्छा होता है, एक आध दो बार होता है ना ऐसा कुछ, तो फिर यू रियलाइज दैट दिस पर्सन कैन बी टॉक्ड अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, या एंड यू वोंट नीड सम बैकअप थिंग फॉर या इट, या या है ना। तो बात हम्म, सही है यार ये। सही है यार। वेयर वर वी टॉकिंग अबाउट। हाँ, और वन मोर थिंग अबाउट द हाँ स्टीरियोटाइप्स इज लाइक, हाँ नो वन करेक्टेड अस, क्योंकि हमें नॉलेज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव नेवर मीट साउथ इंडियन पीपल इन माय लाइफ टिल आई वाज ग्रोन अप, मतलब हाँ हाँ, गॉट योर for पॉइंट। South Indian, if I had a friend in you know my school, but we हम्म, weren't in same classes, तो इतना interaction हुआ नहीं है। हाँ तो मतलब उससे मेरी बहुत ज्यादा बात हुई, तो मेरे को उसके कल्चर के बारे में बात ज्यादा पता नहीं चली, बट विथ वर्षा आई गॉट टू नो। तो मतलब हम्म, एक स्टीरियोटाइप वहीं से बैठ गया है, जो मूवीज से देखा है, जो शाहरुख हाँ खान से सीखा है हमने। हाँ हाँ हाँ, शाहरुख ने राइट सिखाया राइट। दोस्ती प्यार है, तो वो हाँ हाँ, दोस्त वही ही नैरेटिव बैठा हुआ है बस। हाँ, बैठा हुआ है, बैठा हुआ है, बट हाँ। वी नेवर एक्सप्लोर्ड। वी नेवर तो मतलब एक्सप्लोर। जो तारक मेहता ने सिखाया ना, दैट हाँ, अय्यर इज लाइक दिस, तो आई हमें लाइक लगता है दिस। सारे साउथ इंडियन ऐसे हैं। या या तो एक वो भी बट हमारे बैकग्राउंड की भी थोड़ी गलती है, बट वी एवरी डोंट डिजर्व टू गेट कैंसल्ड। बट विद अय्यर, जितने भी लॉन्डो से वी हैव टॉक्ड अबाउट, लाइक आई डोंट नो अबाउट गर्ल्स, बट गर्ल्स भी ऑनेस्टली, बट जितने भी लोगों से बात किया है, लाइक एवरी टाइम आई मेंशन अय्यर,
one guy from the back goes like, I can't believe how Ayer got Babita. I'm like, every time I see the couple, I'm like, a part of me gets like, oh, like, oh, bro, I got, I'm, oh, bro. I'm not gonna lie, but I have Uh, seen some Insta memes, mm-hmm. and this type of thing is real. Is that real, you, I bro? was like, Uh, yeah, nothing yeah. against the thing, but there is like two Ha. different Mm-hmm. poles, like poles Like, apart person who ha. get together. So Uh, that's that's something you always feel like, always do. oh, Also with Instagram memes, bro, they have gotten so dark and so better, you bro. like that content. And I like that there's so many things that because इतना dark content आता है ना, sometimes I'm like I'm dying to share, but I'm like जिसको share करूँ. I don't want them to end up unliking me. I'm like bro, ठीक है. Like see the kind of memes that we used to share, सारे discuss नहीं हो सकते YouTube पर. हाँ वो नहीं जा सकते bro. डेफिनेटली नहीं जा वो सकते, वो इंटरनेट पे नहीं जा सकते रिस्ट्रिक्शन ब्रो. लग गया है। हाँ ब्रो, वो मीम्स नहीं जा सकते इंटरनेट पर. फिर ना कैसा होगा पता है, फर्स्ट फीमेल होस्ट और फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन जो साथ में आया, हाँ पहला like YouTube just banned your video. So bro, फिर like हो that गया is अपना. yeah. बट आई थिंक सो वी स्टॉप शेयरिंग दोस टाइप ऑफ हाँ like हाँ. डार्क रील्स, बहुत कम हो गए अपने थोड़ा भी. पहले से अपन कम हो गया. नॉर्मल से, हाँ, हाँ फ्रेंड्स like I think एक कॉमन ग्राउंड है फ्रेंड्स. फ्रेंड्स. हाँ एक तो कॉमन लास्ट ग्राउंड. मैंने याद किया था चैनल बिंग वाला, मैंने तेरे को हाँ सेंड हाँ किया है, हाँ देखा. चैंडलर वाला. हाँ हाँ, देखा. Like, who's your favorite character from Friends? चैंडलर एंड जोई, Ch- इवन फीबी. Phoebe is a great character. Like Phoebe don't get as much appreciation as other characters, bro. शी डिजर्व्स मोर, Oh, शी bro. डिजर्व्स मोर. Dope character. Dope character. Dope, legit. Like उसके comebacks you won't realize when you first हाँ see the season. हाँ. Like तुम्हें you it took me 5 seasons हम्म. to understand that character. हाँ. बट बंदी जो सिक्सेस मारती है, जो बोलती है, हाँ. अलग है लेवल उसका. You can't expect her what she's gonna say. या व्हाट यू कांट. हाँ you और like. बहुत अच्छा है. हाँ अच्छा like in the most emotional scenes she will make a joke. जहाँ पे एंड आई चैंडलर एम भी नहीं लाइक, करेगा. Phoebe will like अच्छा oh that's great. Yeah. Like and if I one of the just a go sec, on. one of the episode I clearly remember is the हम्म. one that I guess Tom Cruise house उसमें, if I'm not wrong, it is Tom Cruise. Tom Cruise और वो था. Who's the other guy? अरे यार कौन था? No. Like This guy comes and he makes Rachel look हाँ bad. हाँ the Ross and he has a kind of a group in high हाँ school हाँ हाँ. जहाँ they And then hated. he's making fun of Rachel. He's trying to do bullshit, and Phoebe is like, "Who are you?" I'm like, "What the hell?" वो बंदा तेरी फ्रेंड को मजाक बना रहा है, तुझे उसका नंबर लेना. हाँ bro like let me just check the name एक मिनट. Yeah, I can't. So you do. No. His guy's name is Tom Cruise है यार. no Tom Cruise नहीं है. Brad Pitt. मेरे को याद. Brad Pitt, yeah, Brad Pitt. Sorry, Brad yeah. Pitt bro. Brad Pitt. Brad Pitt, Brad Pitt. Tom Cruise never made into I think ये ना. He Friends. isn't in the series. Sorry. मेरे को हाँ पता नहीं Tom Cruise क्यों याद है, but हाँ हाँ Brad Pitt. ठीक है. Like recently I started watching The Office. Okay, you have. I need to हाँ start. like It is on my wish list. I need to start. हाँ like But यार what बहुत बड़ी है. ऑफिस ना हाँ वो लगभग उतनी बड़ी है जितनी फ्रेंड्स है. पर फ्रेंड्स का तो यार लॉकडाउन था ना, तो निकल हाँ गया वो भी था. बात है. अभी टाइम नहीं मतलब मिलता. अभी भी एक हफ्ते में एक एपिसोड या दो एपिसोड हो जाता है उससे ज्यादा नहीं होता है. वो लाइक हाँ बट आई इनिशियली आई डिडंट लाइक पहला एक दो एपिसोड नहीं अच्छा लगा. But अच्छा. then I kind of stick to it. Now I'm like, bro, that's so cool. The Office, It is fun. The Office is like when you're in your teenage, then you like Friends. And the once you kind of get into 20s, and you watch Office, and you like Friends is like a show जहाँ पे you will watch the characters and you will like I want to be like them. And with Office is like you will watch the characters and you will like I've seen this guy before. He seems relatable. That's the Yeah. I think that's वो मेरा difference आया like You The won't be Office and able to Friends. relate with Friends character. Yeah, Friend you you can't will be, relate. but हाँ after a period of time, like हाँ 20-21 साल के हो जाओगे ना, उसके बाद you will think that हाँ ये थोड़ा similar सा है, but हाँ इतना relate नहीं कर पाओगे. You will have fun watching them. हाँ you will like I want to have a cool group like they are the cool kids of school. You want to Cool be a kids of. part of them, but you like वो थोड़ा overly वो है over the line है that it's like हाँ. too fictional. With Office Yeah, that's not exactly. the case. हाँ. The Office like I seen this guy.
देखा है ऐसे ऐसा नार्सिसिस्टिक ऐसा बॉस ऐसा कुछ देखे हैं। रिलेटेबल दिख रहा हाँ है? हाँ, ऐसे नार्सिसिस्टिक बॉस देखे हैं जिनकी पूरी दुनिया में उनको ही लगता है कि मेरे को सब आता है, nobody can beat me in the office, the one best boss The वाला reason वर्ड why लेके people चलते हैं। hate their bosses. हाँ We हाँ get हाँ it. Why? हाँ, Why they do? We get it. nobody likes HR, he gets treated bad. Okay, not that I'm feeling that right. Not You that are a bro. good one, but No I no, can like say. just confirming to Jenny if she watches this episode. It's not related to you, Jenny. No, bro. We are No not bro, no back bro. We're bitching not you. we're No, no, not no. bitching, no bro. We're not bitching. But for the point being, like that's the case. But Sorry हाँ, से आपका I टॉपिक wanted बता to है। start it. मेरे को बहुत सारे वो पता है रील्स आते हैं ना, तब तुम्हारा इंटरेस्ट जगता है. हाँ I was like हाँ। मेरे को देखनी है. But हम्म I couldn't get time. एक How I Met Your Mother. वो This भी is also कूल वन। a cool one. A lot हम्म of people said that it's okay, and a हम्म lot of said that it is more better than Friends. I was like, हम्म more better than Friends? हम्म, More better? How? What the type of grammar I'm using? It is better than Friends. I'm like, better than Friends. Now, this is हाँ something I would love to see. But again, it is हाँ a long series. हाँ, लेकिन सी आई थिंक लाइक हाँ वही है, लाइक फ्रेंड्स से थोड़ा बेटर है आई गेस। हम भी पूरा नहीं देखे, लाइक मैं कुछ एपिसोड्स देखे हैं, हाँ, लाइक वेरी फ्यू। बट इट्स लाइक द सेम दैट यू लाइक इन टीनेजर, लाइक यू वांट टू बी दैट गाय हु गेट्स एवरी गर्ल, लाइक काइंड ऑफ थिंग। एंड बट वो द मोर आई थिंक यू विल एट दिस पॉइंट लाइक द ऑफिस मोर। हाँ, Okay. जब मौका मिले ट्राई करना, बट आई नो यू आर लाइक टाइम, यू डोंट हैव द टाइम ब्रो, बट I think so. Now I should start giving myself some more time. I need सम that मोर टाइम। leisure time also. I हाँ will हाँ, try. I will आई try. विल ट्राई, ट्राई फॉर श्योर। Yeah. एक तो बट बड़ी सीरीज होती है तो मेरे को बहुत कंटाला आता है देखने में. अरे यार, I started this series called Breaking Bad. It is good. It is about ब्रेकिंग a बैड। chemistry teacher. If you have seen, मैंने एक दो एपिसोड देखे and I'm like, यार ये बहुत बड़ी सीरीज and the series is legit 45 minutes. 45 minutes का एक एपिसोड and there are around 60 9 to 10 सीजन। episodes and I'm like ये बहुत बड़ा है. हाँ बहुत Mm, बड़ा है। राइट हाँ, टाइम नहीं है so यार अभी, लाइक even लाइक हाँ आई even वॉच। with हाँ हाँ, बोल बहुत बोल बोल. I was saying like पिछले month I watched like Oscar winning movie called a German movie, I think, All Quiet on the Western Front। 2 घंटे का मूवी है Yeah, वो। I have heard it. I heard it, like मेरे को 1 हफ्ता लगा वो 2 घंटे का मूवी खत्म करने में। That's how you don't get time and you can get older। 10 मिनट का देखा, 15 मिनट का देखा, बहुत हो गया भाई, बंद करते हैं अब। बहुत हो गया. हाँ यार, नहीं पसंद आता एक ना एक. मैं बीच में शर्नोबिल चालू किया था I haven't and heard I of that। got so bored. You haven't heard of Chernobyl? No bro। Oh, it is a great movie. Actually, I will tell you what it is. But मैंने start किया हाँ around 15 minutes and I हाँ was like, यार ये बहुत धीमी है मूवी. मेरे को इसको फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा, 2x पे देखना पड़ेगा. And हाँ I didn't watch it then. हाँ। But it is about a blast that happened in Russia. ओके नहीं, रशिया ऐसा कुछ था यार, आई डोंट ओके रिमेम्बर. बट ओके। एक न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा था एंड इट एक्सप्लोडेड एंड द इट वेंट अराउंड द होल सिटी हम्म। एंड द सिटी इज स्टिल अफेक्टेड लाइक यू नो हिरोशिमा एंड नागासाकी. हाँ हाँ हाँ। सेम सॉर्ट ऑफ थिंग. ओ बट ये खुद की वजह से हुआ है उनका. ओ उनका कुछ फेलियर था तो उनको खुद की वजह से हुआ है एंड द सिटी इज स्टिल अफेक्टेड एंड द 40 kilometers का एरिया इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू पीपल. ओ बिकॉज ऑफ द रेडिएशन आई This गेस। yeah, the radiations are हम्म still present ऐसा है. तो ओ ऐसा कुछ था. You can watch it, Chernobyl. It's like a good movie. एक हम्म। बार वो पता है एक टाइम रिदम भी चाहिए होता है that हाँ once you हाँ start having that rhythm तो हाँ। तुम मजा आएगा तुम्हें. वो बट वो तो है। मेरा रिदम ही नहीं बैठ रहा है क्योंकि एक हाँ तो थके हुए आते हैं और उसमें भी फिर देखो बट या. हाँ, like this is the reason, like in podcast I was listening that why that kind of entertainment based movie, that commercial movies kind of sells better in India, because of this reason। तो भाई दिन भर 8 घंटे काम करके आया है, अभी इंटेलेक्चुअल नहीं चाहिए कुछ, अभी एग्जैक्टली. मेक मी लव मेक मी थिंक हाँ. आई एम लाइक उससे काइंड ऑफ माय एस्केप टू थिंग्स, या राइट। एग्जैक्टली. हाँ, कॉमेडी देख लो. कॉमेडी लाइक कॉमेडी देख लो, कॉमेडी है या रोमांस है लाइक दैट सॉर्ट ऑफ जो भी, हाँ जनर्स आर हाँ। मोर प्रेफरेबल. मेक मी लाफ, मेक मी Yeah, इंटरेस्टेड। make me laugh. I हाँ don't दैट्स want to व्हाई। use my brain more. हाँ I हाँ have done that enough. हाँ हाँ, तो इसलिए एंटरटेनमेंट मूवीज चलती है, लाइक इवन वीरदास, वीरदास द कॉमिक, ही आल्सो टॉक्स I अबाउट love इट। him. हाँ, इट्स अ ग्रेट गाय मैन, लाइक
Great. Yeah, he has started like documenting a certain thing or YouTube पे अभी चालू किया I think हाँ. recently. Also his 10 on 10 episode is coming in. So I'm excited for that. So he was saying something like how he sees his comedy sets. Like when some people comes into my show, I want to be like I want them to forget how shitty their life is and enjoy. Shitty not Enjoy. in a bad But term, but how like कि जो भी बुरी चीजें sad चल or रही हैं, not हाँ even हाँ sad, but how थके हुए they are. If हाँ 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 हाँ, थके हुए थे यार want to give them that 10 to 20 minutes of relaxation and रिलैक्सिंग forget हाँ every load they have हाँ हाँ in work life or in a personal life do and just bad enjoy it. तेरा pressure अभी that will go away when for 20 minutes you will just laugh so that's Yeah, how he exactly. sees And that is comedy. needed. That is good. That is needed. That is needed. That is needed. I सही में. Yeah. I went on a trip तो नहीं बोलेंगे but college की एक छोटी सी trip थी and they made us having that laughing session. I was like क्या यार ये बुजुर्ग लोग वाला चीजें हमें करवा रहे हाँ हो. हाँ हाँ बोला ना हाँ And ha, and the fake laugh. क्या जिंदगी में fake laugh कम नहीं करते. तुम्हें यहाँ भी करवानी है. But it हाँ actually helped. It actually helped. yeah It you really for it did. bro It did. It legit did. पहले 2-3 मिनट ना you will feel like ये क्या करवा रहे हैं. But then when you get into that rhythm, you will actually feel happy. And your mind gets happy. either it's the rhythm or it's like watching your friends laugh and look they look It does. they're You're like क्या proud. दिख रहा है ये क्या देख रही हो मैं जोक कर like साथ. that's the thing with guys they will look each other up for 30 seconds and then start laughing for no reason And not even like 30 seconds, like just an eye contact. I'm trying not to हाँ laugh too much looking at you also. I'm like, मेरे को ऐसा ना. I'm like control है. कभी तो serious बातें करता है ना, and then I look at your face and I'm like shit नहीं हंसना है हाँ अभी. नहीं हंसना है हाँ like somebody laughs and then you see them like you're gonna laugh more हाँ ऐसा होता है. And ऐसा that होता है वो एक rhythm भी होता है उनका जो टेक्निक होता है ना हंसाने का. वो एक हंसाने का टेक्निक भी तुम्हें जब बैठता है ना तुम अपने आप हंसते हो तो वो एक अच्छी चीज है. अच्छा तो लाइक ये बहुत नीडेड है. 10 मिनट का ये जो लाफ्टर है ना वो बहुत नीडेड है लाइफ में. yeah I think अभी भी अभी नाउ दैट वी आर मेकिंग दिस थिंग पॉडकास्ट साइड पे है बट मेरा भी खुद का एक क्या बोलते हैं एंटरटेनमेंट हो रहा है या मेरे को भी एक रिलैक्सेशन मिल रहा हाँ है. हाँ conversations are great in that way वरना मैं अभी अपने कंप्यूटर पे लगी होती अपना रिपोर्ट बनाने के लिए अच्छा एंड आई वुड हैव बीन स्ट्रेस्ड. हाँ तो हाँ मतलब वो एक चीज चाहिए. हाँ like when you like walk away from a good conversation your head feels so light feels like and you are yeah you are like yes अब मैं काम कर सकती हूँ. that हाँ efficiency हाँ increases. हाँ like they're so like you can't expect how selfish I am for running this podcast It's okay. like भाई किसी का तो भला हो रहा है. दूसरा का टाइम लेके खुद को रिलैक्स करो नहीं नहीं. नहीं नहीं हाँ हाँ हमें भी आपके पॉडकास्ट पे आने का मौका मिल रहा है. आपको podcast आने का आपके like how you दर्शकों को gonna handle this fame bro I'm like just very curious to know like walking away how you gonna handle this fame oh my god समझ रहे हो like I 17 subscribers and 22 followers how you gonna pay how you gonna like I am not able to process that fame bro like 17 लोग you know get that like so वही है भाई like 17 लोग मेरे को 17 जानेंगे. 17 लोग मेरे को oh my जानेंगे like I god walk into the gym I don't look at 3 people like fame है भाई तेरे को थोड़ी देखूंगा क्यों देखूंगा. क्या ही देखूंगा भाई तू तू तेरे को कल तक जानते थे, तू थोड़ी है अब बड़ा आदमी बन गया कौन हो 17 तुम. लोग हाँ हाँ बड़े आदमी हम, हाँ यूट्यूब वाले हैं हम. यूट्यूब वाले यूट्यूब भाई चैनल वाले. यूट्यूब यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर है हम कंटेंट क्रिएटर है पहले क्या यार पहले एक तू पॉइंट था कैंसिल होगा भाई. तू आज कैंसिल होगा. पहले व्यूज मिलेंगे तो जरूर Bro, क्या बोलते हैं this like fuck I forgot sorry like what they were saying something I don't know fuck I forgot मेरे को ऐसे मोमेंट में ना किसी को ऐसे बोलने की इच्छा होती है जब वॉशरूम जाके याद आ जाएगा. no अच्छा really आता है. आता है I don't know आता है I मेरे don't को know 2-3 बार हुआ है ऐसा. so what so okay I just don't want to imagine but okay Shut up. okay I'm not imagining okay Okay, don't. God. नहीं मतलब वो पता है हाँ एक हाँ got your दिमाग में point चलता रहता है. हम्म एंड देन व्हेन यू रीच अ पॉइंट यू आर लाइक यस ये बोलना था मेरे को. वही बोला था हाँ
Like I'm just saying that the pressure of being a content creator, ना कुछ है भी नहीं तब भी pressure है. Like I love joking around when I don't have a lot of things to joke around. Like ऐसे चीजें कुछ subscriber नहीं है, I having fun. Like when you don't have you get failed at something, I like just enjoy having fun around that. But that's great thing. Yeah, वरना it's great. demotivate होना is like हो नहीं जाते हैं नहीं लोग नहीं ऐसा नहीं कि डू मेरे को वो बस फनी लगता है for some फनी reason. लगता है ये क्या किया हमने क्या किया आपने? Like ये क्या किया like in that way I so enjoy offending people. Part of me like I don't like bro. मजा Like आया पर उसमें मजा है हाँ bro like it's बहुत fun मजा bro आया like हाँ I'm not gonna say something like I don't know where to draw the line of being like stupid and being like just being funny. You have to be a bit of both. But I get it कि हाँ कुछ boundaries होती हैं. But I just still like to joke around. Like बट यू नो एक ऑफेंड करने में भी मजा है मजा तू तो ऑफेंड हो गया तू हाँ मेरे साथ उल्टा आर्ग्यूमेंट हाँ करेगा और बस मैं बस यहाँ पे बैठे हंस रही हूँ और बेस्ट बेस्ट पॉइंट है जब तेरे को ऑफेंड करने का मन नहीं था तेरे को चाहिए था बस फन हो जाए भाई मजे हाँ करने हैं यार तू फन हो जाए तू खेल मेरे को टाइम पास करना अब था तू बोलेगा आई जस्ट हैव फन कुछ नहीं एक बार वो रिदम बैठ जाता है ना देन यू डोंट हैव टू डू मच थिंग जस्ट रिपीट देयर सेंटेंस एंड ऐड अ वर्ड बस अरे एक एंड रहेगा इवन इफ यू आर लाइक जस्ट स्टेयरिंग एट देम दे विल गेट मोर यू नो हाँ एंग्री कि यार हाँ मैं इतना भाषण दे रहा हूँ तू देख रही है मेरे सामने हाँ and the best thing like when they're just telling you ये है वो है why you do say this or why you do that I just go like I go just silent for a minute and they look at them and they can't kind of tolerate the silence and it becomes so funny अरे वी हैव दिस व्हेनेवर आई एम इन इंटर्नशिप हम लोग इंटर्न्स हैं तो वी हैव hmm गॉट अ स्पेस hmm वेयर वी कैन सिट एंड डू आवर वर्क बट hmm नाउ नॉट एवरी टाइम लाइक मैं सच बताऊं 9:30 को जाती हूँ मेरा hmm काम 10:30 को चालू होता है तो hmm 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ hmm डॉट 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 करना होता है अच्छा समझ आना ठीक हाँ गाली नहीं दी सकती घर पे cool तो अब तो हम लोग ऐसे नॉर्मल सा कोई डिस्कशन ऐसे चलता है और मेरे hmm को ना बहुत पसंद है ऐसा डिस्कशन मेरे को कोई भी टॉपिक ले लो मेरे को डिस्कशन करना है हाँ इफ इट्स अबाउट वर्क इट इज hmm अबाउट पर्सनल इट इज hmm अबाउट कल्चर कुछ भी हाँ कुछ और मैं कुछ ऐसा बोलूं मेरा हाँ बोलने का इंटेंशन भी नहीं होता एक तो आधे टाइम लोग मेरे को समझते नहीं है मेरे को बहुत गुस्सा आता है यार मेरी समझ जाओ बात तुम हाँ ऐसे मेरे को पूरा एक्सप्लेन करने के लिए ना बैठाओ एंड देन दे गेट ऑफेंड एंड आई hmm एम लाइक नहीं नहीं कर ले गुस्सा कर ले बाहर निकाल ले फिर मैं अपने आप हाँ को एक्सप्लेन करती हूँ मेरे को कुछ नहीं करना मैं तेरे को देख के अपना एंटरटेनमेंट करूंगी हाँ दोज आर द फन पार्ट्स those are the fun part हाँ like people like if you just sometimes you just know how to play around people end up making their own fun without them realizing it so it's and fun that is like this that's is like fun an art this is an this is an art art actually to trick people like like Rajvi we are so suited for going for gambling and going for all kind of mean stuff like the conversation that we're having I think we should plan some sort of gambling maybe a heist or maybe off I don't know camera obviously obviously नहीं obviously ऐसे नहीं बट ऑफ कैमरा अपन एक ऐसा हाँ पूरा डिस्कशन करेंगे हाँ बैठ के बैठ के हाँ कि लाइक लाइक आई हैव लाइक समथिंग इस पे बात आई मेरे जिम के पास एक जगह है ठीक है सो इट्स लाइक फॉर द ओल्डर पीपल नॉट वेरी ओल्ड बट दे कम फ्रॉम 30-35 उम्र के लोग भी आते हैं एंड दे आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट आई डोंट नो व्हाई दे आर टॉकिंग अबाउट लाइक 35 के उम्र में दे आर डिस्कसिंग कि हाउ इट इज ओके टू बी देखो रोमांटिक गाने होते हैं ना बट रोमांटिक गाने बॉलीवुड टाइप्स नहीं वो जो थोड़े लोकल आर्टिस्ट बनाते हैं हाँ हाँ बट नॉट विद ग्रेट लिरिक्स कुछ अच्छे होते हैं लोकल आर्टिस्ट कुछ अच्छे नहीं होते हैं पर जो अच्छे नहीं होते वो बज रहे होते हैं एंड देन यू हाँ look at listen to them and you watch every guy and a part of you goes like कुछ तो बुरा हो रहा है you like I look at that place and a part of me is like that is such a good place to smuggle drugs सुबह बुलाओ गाना बजाओ बैग में एक पुड़िया डालो एंड देन बाय nobody will find that okay बूढ़े लोग हैं तो कौन करेंगे like a part of me is like that is such a great place to start drug smuggling I'm like cool so every time I kind of look around that maybe okay maybe I'll find something then I'll make a करते हैं recording कुछ ऐसा हाँ then I'll make a recording and then I'm like bro I have the recording let's talk money right yeah बात तो सही है हाँ ऐसे तो कुछ करना like चाहिए हाँ कुछ करना तो चाहिए
तो वही है। क्या हम कहाँ से कहाँ आ गए ना. हाँ, यही लाइक यही तो अच्छी बात है ना ब्रो। लाइक when कहीं से you look at ट्रैवल। the conversation starting, हाँ हम हाँ, लोग कुछ स्पिरिचुअलिटी अलग स्टार्ट बात करा, कर रहे हाँ थे. हाँ। स्पिरिचुअलिटी वो तो ठीक है, पर हमने ये वाला टॉपिक भी ऐसे कुछ स्टार्ट किया था, व्हाई यू स्टार्ट जिम और हाँ ऐसा हाँ कुछ हाँ था. हाँ, ऐसे कुछ था, व्हाट याद एल्स. भी नहीं है, याद भी अलग नहीं था, है। अलग था, हाँ, वो याद कुछ नहीं था है. हाँ। ठीक है ना, बट कोई ऐसा नहीं। करना चाहिए कुछ. ऐसा करना चाहिए। ऐसे नहीं तो ऐसे पैसे निकालने चाहिए. ऐसे नहीं तो ऐसे पैसे निकालने चाहिए ब्रो, लाइक हाँ हाँ। पैसे इंपॉर्टेंट है भाई. पैसे इंपॉर्टेंट है भाई, कोई शर्म ना है बोलने में, हाँ। तो सही मनी है। कैन बाय यू हैप्पीनेस भाई. हाँ ये हाँ गलत है. हाँ हाँ, सही बात है ब्रो। आस्क एनी गाय, आस्क एनी गाय हु हैज 6000, he will tell you. Right? No, cool. Yeah. Right. So that's just the thing. बहुत बहुत सही है. बहुत सही है. Just it's a random 6000. I didn't mean something. Of course, of course. 6000 में वही क्लिक होता 6000. है. Like I don't know, it just came as a natural. I don't know figure why. But the वो point दिमाग में वो चल. चलता होता है. You never know, right? हाँ. यस. तो वही है. तुम्हारी गलती नहीं है, वो तुम्हारे दिमाग की है. ट्रेंड है तुम्हारा दिमाग उस ट्रेंड है. चीज के लिए. ट्रेंड है उसमें भी. टेक्निकली एफर्ट तो मेरा ही रहा है. सच बताऊं, आई डोंट हाँ नो इफ आई शुड से दिस और नॉट, हाँ बट मैं हाँ बहुत सारी चीजें बोलती हूँ ना, तब मेरे को अभी भी इवन रिसेंटली आई एम लाइक इसको पूरा क्लैरिफाई करके बोलो. हाँ. तुम्हारे दिमाग में चला ना चला, मेरे दिमाग में वो चल रहा है. Sometimes I leave it that way. Sometimes I leave it that way. हाँ भाई. ठीक है. Sometimes like they will get, like I'll say something serious and they will get something kind of double meaning and they will start laughing and I'll join them. I'm like ठीक है, सही है. And सही है. then I'll, मेरे को नहीं भी पता होगा ना तभी I'll add on to it कि हाँ कुछ और उल्टी बात फिर बोल दूंगा. तो वही है. बहुत गंदा दिमाग होता है. हाँ. तो like but you have fun bro, like हाँ. ऐसे मजा आता है. मजा जो है वो है. जो है, जो है वो है पापा bro. मम्मी के सामने है नहीं, दोस्तों के है नहीं सामने है, है ठीक है. यूट्यूब. हाँ. तो लाइक यूट्यूब के सामने ज्यादा. पापा मम्मी यहाँ तक थोड़ी वीडियो देखेंगे 1.5 घंटे तक. लाइक माय पेरेंट्स लाइक वॉच फॉर 5 मिनट्स एंड देर लाइक होगी. अच्छा. हाँ फिर हाँ डू. हाँ, लाइक आई मैं टोल्ड पांच देम. मिनट देखते हैं. हाँ हाँ, मैंने बोल रखा है. मैंने लाइक दिस इज अ चैनल, इट्स लाइक इफ यू वांट टू वॉच इट वॉच इट. वो पहले 10 सेकंड रील्स देखते हैं, देन दे स्वाइप अप और दे वॉच द यूट्यूब. लाइक दिन भर तो तेरे को देख रहे भाई, कितना बोलेगा तू. तू अलग क्या बोल रहा है. रोज तो इतना बोलते हैं रोज हमारे तो सामने, बोलता और है हाँ कितना. हाँ. हाँ हाँ, तेरे को ही देखे हम तो. हम लाइक चिल है. इतना चिल. प्यारा नहीं है तू. हाँ हाँ हाँ. चिल है. हम लाइक अच्छा ही है ब्रो. I'm like part of it, like that's why I keep this type of conversation at the end. Start. आई. ओके. मेरे को एक क्वेश्चन आया. हाँ हाँ. अभी ये बोला ना मैंने, इतना हम्म प्यारा हम्म नहीं है तू. हम्म तो इफ आई डोंट थिंक सो इफ इट दिस इज लाइक इन योर हाउस आल्सो, बट मेरे जो दोस्त हैं लड़के, वो तो मेरे को ऐसे ही बोलते हैं. एंड यस्टरडे आई वाज ट्रैवलिंग इन बीआरटीएस और मैं ऐसे ही आ रही थी. हम्म एंड मैं कल मैच देखने गई थी, तो मेरे को आते आते दो, एक डेढ़ डेढ़ दो बज गए. हम्म And the guys who were just right in beside me, they were हम्म talking about a friend. अब of हम्म. course तुम्हें conversation सुनाई देगी, ऐसा तो है हाँ नहीं. हाँ, of course. Quite loud. So they were like, is they one of their friend doesn't get allowed after 10 o'clock. 10 Okay. PM के बाद घर से बाहर नहीं निकल. तो फिर वो लड़का बोला that लड़का होके भी 10 PM के बाद नहीं निकलना, हमारे वहां तो एक एक बज जाए ना फिर भी बोलता है घर के बाहर रहो. तो इज इट दैट सेम विथ यू ऑल्सो? बिकॉज माई फ्रेंड ऑल्सो कंप्लेन अबाउट इट कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. तुम 12 बजे आओ, 2 बजे आओ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर से बोलते कि तुम बाहर ही रहो. Like सो इज इट लाइक. it matters if I'm doing it every day. अच्छा. हाँ, मतलब अब रोज ही घर से ही गायब है बंदा, पता ही नहीं है घर कहाँ है. तो मे बी देर लाइक कहाँ है तू. हाँ but उतना उतना कोई टेंशन नहीं. कभी कभी बाहर चले जाते हो तो फिर ऐसे कॉल हाँ वॉल नहीं हाँ. आते. लाइक सी द थिंग इज, एक और भी चीज आई. पहले के मुकाबले थोड़ा कम हो गया बाहर निकलना, बिकॉज डूइंग एवरीथिंग एंड ऑल. बट नाउ व्हेन वी जितने भी फ्रेंड्स हैं, जब जाते हैं तो वी गो फॉर लॉन्ग थिंग. शाम को 4 बजे गए, रात को 11 बजे 12 बजे के बाद आना. हाँ तो लाइक वी. मतलब तब कॉल नहीं आता. तब कौन नहीं आता क्योंकि लाइक उतना रेगुलर नहीं है तो देर ओके. बट आई एम लाइक it's just I have kind of also understood that parents worry about you to some point. Like I've been to a place जहाँ पे like a part of you sometimes is embarrassed कि अब भाई दोस्तों के सामने पापा की कॉल कर रहे हैं, right? हाँ. Going from that to a point where my friend circle is like अब
तो ऐसे कॉल आता पापा है, को फोन करके, हाँ, हाँ कॉल आता है तो कार में म्यूजिक कम हो जाता है, पिक अप द कॉल, टेल यू 1 घंटे में आ रहे हैं, एंड देन एंड अप द कॉल एंड देन टर्न द म्यूजिक अगेन म्यूजिक ऑन, टर्न्स ऑन. दे हैव बट द फन। मेन पॉइंट वाज लाइक, ऐसा है कि एज यू गाइस, एज अ हाँ गाय ग्रोज अप, हम्म, पेरेंट्स को एक छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है. यार हाँ फोड़ लेगा बंदा है, 12 बजे है, 1 बजे है, हाँ हाँ 3 बजे फोड़ लेगा, जो भी हाँ होगा वो. तो एक वो मेंटालिटी भी उनके अंदर आ जाती है, हाँ, स्पेशली फादर. स्पेशली फादर, नॉट विद एवरी गाय, मैंने देखा है कुछ कुछ लड़कों के साथ ऐसा केस नहीं है, द पेरेंट्स आर जस्ट फेड अप, सम आर नॉट, तू बट बाहर है हाँ भाई. हाँ तो बाहर भाई, हाँ वो तो है, वो देखा है, बट हाँ ऑल्सो लाइक इफ यू जस्ट काइंड ऑफ टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट हेल्प्स. अ लॉट ऑफ पीपल डोंट गेट इट, दे लाइक कि नहीं नहीं पूरा ही रेबेलियन ही खेलना है ये. नो नो, इफ यू कम टू अ मिडिल ग्राउंड वी कैन हैव अ कन्वर्सेशन दैट आई वांट टू गो आउट, बट यू आल्सो टेकिंग सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो दे लाइक ओके कूल. वो सही है, So that's the case with me. So I take some क्योंकि हमें responsibility. नहीं, हाँ. हम 16 के हो या 22 के हो, It's वी हैव sad टू though. बी. It's sad though. It's sad. When you actually like nightlife and you have हाँ this हाँ type हाँ. of It's restriction, sad. it is worst. हाँ bro. Like even I have elder sisters. I get it. Sometimes I'm like, bro, I get that permission. She doesn't. So I'm like, you gotta be fucking grateful for that. Yeah. You don't Exactly. you don't You don't like have to beg. yeah. Nah, you don't take that for granted. Yeah, like And actually, it's like, if I you get sometimes it, used to like, I was a guy at some point हाँ of हाँ. time. But I get Yeah. it, they do for protection, and I totally get it. They do it Hmm. for the protection. Hmm. But still, it like, sometimes you feel like restricted if you Yeah, don't like like it, it. it feels sad when you don't have the freedom to have that conversation. Yeah. You don't have problem with protection, but you're like, वो allowed ही नहीं है, then you're like, No, yeah. yeah, so Luckily, touch wood, I am allowed. Like हाँ, so sometimes that, there are times नवरात्रि वगैरह होता है तो मैं 12 बजे और 1-1 बजे घर आती हूँ. They don't tell me a lot. But हाँ, फिर 9 दिन नहीं. Don't have that consistent for 9 दिन. it's the same thing. Like हाँ, घर में ही नहीं रह रहा बंदा, वो ऐसा नहीं कर हाँ ना, हाँ हाँ ऐसा नहीं. हाँ बट या समटाइम्स लाइक मेरा भी बहुत बाहर जाना कम हो गया है कंपेयर टू हाँ बिफोर. एंड आई एम, अब तो मेरे को खुद होता है घर जाओ यार, दस हाँ, बज के अब तो घर भाई जाओ, चॉइस कितना कम हो गया बैठोगे. है, अब तो भाई चॉइस ही कम हो गया है. हाँ, लाइक अब मेरे को समझ नहीं आता है कि बिना मतलब के रेस्टोरेंट जाना क्यों है. क्यों है, हाँ, Like I have few friends like they just go to mall to hang around. I'm like क्यों करना है? I'm क्यों not करना going है, to eat. I'm not going on a movie. I'm not going on a date. I'm not gonna buy something. क्या करे जाकर हम? क्या करे ना, हाँ So वही. हाँ, like कुछ नहीं है, कोई एंड चीज के एक्चुअली पास नहीं एक्स्ट्रा है. खर्चा हो जाता है. When you go there, एक्स्ट्रा खर्चा करके तुम आते हो, हाँ like which is not supposed to happen. things that you don't need, things that you don't relate, you'll end up watching buying it. एंड बाइंग के हिसाब में तो बाइंग छोड़, मैं तो फूड के बारे में बात कर रही हूँ. Food खर्च खाने का इतना हो जाता है रे. हाँ like हाँ बाइंग तो and दूसरी बात है. and then you बीइंग like अ फूडी हर्ट्स bro, it hurts. समटाइम्स. And यार especially you क्या want to है. take care of yourself health wise, right? That hurts. Like bro, like sometimes I'm having golgappe and like chicken masala, and I'm like part of me is like bro. I was like, recently ऐसा हुआ. हाँ हाँ I said that I'm on diet to a हाँ friend of mine. हाँ 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 And the next moment he called me and he's like, आ जाना, चलना बाहर मिलते हैं. I was like, ठीक है. हाँ And I was eating what happened. He's like, तू तो diet पे थी ना. I was like, तो बुलाया क्यों तूने? When you know हाँ that if we are gonna meet, we are gonna have a food. तो हाँ फिर बोला, और घर जाके अलग से खाया दबा हम्म के, वो अलग. हम्म. तो और बहुत like गंदा है यार. और बाहर में like majority with good meals it's like you gotta prepare them, like वो पहले से prepared कम ही आते हैं, so you're gonna end up having McDonald's and all, so annoying, so man, वही सही है. It's bad. it's bad. Need to control that. Yeah. So ठीक है फिर like sometimes चलता है like कभी कभी. हाँ sometimes हाँ नहीं, ठीक है. मेरे को एक ही क्वेश्चन था, क्योंकि मेरे दोस्त भी बहुत कंप्लेन करते हैं कि उनको पढ़ी नहीं है. हम लाइक, ऐसा नहीं होता, पेरेंट्स को पढ़ी होती, बट वो एक छूट होता है. एंड दे पढ़ी आल्सो टॉक इट इन दैट हाँ 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 फन वे कि उनको पढ़ी नहीं है. हाँ नहीं पढ़ी होती है, it's just I realize that you can't. प्रॉब्लम क्या होता है ना दैट व्हेन द पेरेंट्स कांट सी यू दैट यू आर बिकमिंग अ नॉट बिकमिंग अ मैन, देन इट्स अ प्रॉब्लम. देन मैंने देखा है कि मेजॉरिटी लड़कों के साथ व्हेन दे स्टार्ट अर्निंग और डूइंग समथिंग पेरेंट्स बिकम सो चिल. बिफोर दैट दे आर अनॉयड, कहाँ जा रहा है तू, क्या कर रहा है, कब आएगा, एंड दे अनॉयड, नाउ आई एम ओ, चिल, नाउ आई एम चिल, हाँ, नाउ. ही नोज दैट द हाँ हाँ गाय इज हैविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हाँ ये फन चाहिए उसको. हाँ like now at a place that I'm making good enough friends to kind of introduce them to my parents.
Like पहले तो True. when you make it teenagers, there's so many friends that you can't even introduce to your parents. And then you make a friend as an adult, you're like, now I can at least सबको नहीं, but कुछ लोगों तो I can introduce to them. Yeah, So exactly. so they see your group, they like whom you're hanging around with, like Same like happened with me. Like even with the male friends now. हम्म, My parents know. पहले हाँ उनको नहीं पता. हाँ They never used to know. Oh shit, I'm exposing myself, but okay. पहले हाँ उनको नहीं पता था. हाँ हाँ पता है लड़की बोलती है वैसा देखा but ये सिगरेट बुलाने के लिए तो बताया पॉडकास्ट पर सिगरेट निकलने तुम्हारे यहाँ सीक्रेट्स निकालने हैं ब्रो हाँ हाँ okay. हाँ Mom and dad, I'm sorry, but okay, I am not regretting. But वो एक होता है ना हाँ that हाँ you don't tell them. But now हम्म, I'm like even all the guys. There are हम्म, 3 friends of mine who are male. हम्म, They know that ये है. फिर हम्म, तू है अनुपम हम्म, सर को ले ले. They know हाँ that she is working with them. उसके friends है हम्म, उनसे बातें होती है. So हाँ then हाँ they are now like okay. हाँ लड़की अभी बड़ी हो रही है तो that's a thing होते हैं. हम्म तो ऐसा हो जाता है एक. और and they and know that the person if she is telling us then she knows that the guy or the girl is हम्म, good for हाँ her हाँ to हाँ be introduced ऐसा. हाँ and also you come to a point to a mental space where like कितने दिन तक छुपाना है like हाँ just have this conversation and move on bro like I have other things to kind of focus on क्या ये exactly and थोड़ी it थोड़ी is बातों को छुपा इतना के कोई रखें हाँ हाँ इतना कोई बट बड़ा मैं चीज नहीं है that you should हाँ be hiding it. हाँ like just initially you think like oh bro should I tell them now you're like हाँ है तो है like this is the thing this is the person I know them okay let's move on and Exactly, exactly. it becomes so relaxing when parents start treating you as an adult rather than as a child. It becomes so Child. relaxing. You can have difficult conversations then, right? Yeah, exactly. Hmm, True, true, true. true, true. That's very true. And they will realize they will actually share more also. Hmm. First even they won't, but when Hmm. they realize and when you start Hmm. talking they will also start becoming more open. Yeah. And you know that bonding gets better. Yeah. And also like one of the things, also like a kind of not a side effect. The side effect would be wrong word, but one of the terrifying things to kind of realize when you become an adult is like your parents just know as much as you do at certain things. And maybe know less, right? Because you grow up knowing कि उनको सब पता है, and someday you wake up to a realization that okay, even they make mistakes in in relationships and all, and you're like whom to go out to ask Yeah, for guidance, exactly. and This has happened. uh, Yeah, then you exactly. figure This out is fuck, like, and then you're like, bro, I need to figure out that shit on my own, and then you but kind you of also get some sort of, what do I say that? Uh, support, हाँ 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 mental support that हाँ हाँ उनसे भी हुई है गलती तो हाँ हमसे हाँ भी होगी. उनसे But भी you will होगी learn. हाँ, and like and at the point your parents start looking up to you to learn from you. exactly. Which is like, bro, that's a big ass responsibility, na? Right? To pay like, Even bro, even teaching them the mobile is like a big ass हाँ हाँ responsibility. and you never realize वो shift हुआ कैसे. You one day you just wake up to the realization that they are looking up to you. वो Yeah. एकदम से होता है. You never like a slow transition तो नहीं नहीं होता होता है. या पता नहीं You कैसे never आगे realize बढ़ेगा. it, that this has started. It will be like a month and two, and they will be अचानक realizing it like हाँ wow, it has changed the whole dynamic हाँ of what हाँ we were हाँ. You from like a parent हाँ and a हाँ. kid to being Parent to an friends adult. now. हाँ हाँ. Like you just realize that okay ये तो अब and you suddenly become कि इसको act out कैसे करना है, ये ऐसे right? करते हैं हाँ. कैसे करते हैं but हाँ. So It's a great transition. it's a great transition हाँ. You also learn a lot of things later. हाँ. It like one of the most liberating thing about that is now you realize that now you have the power to fight any battle you want. Like अब जब then you realize कि जब कुछ पता ही नहीं है कि आगे करना क्या है, then I can do anything. Right. True, very true, very Right. true. Right. हाँ. So that's something like then like जब उन्हें भी नहीं पता है, मेरे को भी नहीं पता है. We तो क्या ही both होगा. तो नाइव है जब कुछ खोने को ही नहीं है तो सभी एज पाने को. Right. 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 Okay. क्या होता है. Always end up और having some intellectual conversation in the podcast. what is good. हाँ लाइक वो हो ही जाता है वो अपने में तुम्हारे में हाँ. अंदर है तुम्हें वो चीज कहीं से भी ढूंढ के तुम निकालोगे तो लाइक इट्स ओके. It's I okay. actually thought that this podcast will be more like technical sort of if you are हाँ getting what I'm हाँ trying हाँ to हाँ say.
हाँ थोड़ा पर्सनल ग्रोथ की बात किया तो मेरे को लगा वो सा हाँ होगा हाँ इफ आशीर्वाद वाला जो पॉडकास्ट था मेरे को हाँ, वो वो सिनेरियो टेक्निकल था, था वो दिमाग। काफी टेक्निकल था। हाँ हाँ वो टेक्निकल था, वो से हाँ ये टेक्निकल होगा। हाँ एंड हाँ, दैट्स व्हाई आई सेड दैट कि अपन इतना पर्सनल ग्रोथ पे भी नहीं ध्यान नहीं बात देंगे करते हैं। हाँ बिकॉज दिस इज लाइक यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट। हाँ, पर्सनल ग्रोथ तो ठीक है, पर्सनल ग्रोथ पे तो एक्चुअली बहुत कम बात की, कम बात की, बहुत लाइक कम बात की। बिट्स बिट्स में बात की है, लाइक ऐसा एक प्रॉपर कॉन्वर्सेशन नहीं, पर ठीक है लाइक। प्रॉपर कॉन्वर्सेशन हाँ नहीं है। ऐसे ना, लाइक जस्ट रिलैक्स एंड टॉक्स अबाउट व्हाटएवर यू हाँ वांट। मतलब ठीक एक कन्वर्सेशन पे हाँ दूसरे से हाँ, कुछ और निकला, वो एक रह ही गया है। the only way to have a conversation is to keep it spontaneous. So I keep it that way and have fun. एंड यू आर सक्सीडिंग। Yeah, kind of, kind of. एग्जैक्टली। Kind of. Let's see. Huh. So let's wrap this up. What do you say? श्योर, Huh? आई एम ऑलरेडी। Already इट्स बिन अराउंड 2 hours आई 2 hours. गेस। Huh. Oh One my god, it minute is and 1 hour and 46 minutes. 46 minutes. Yeah. Nice, So nice. cool then. It was So fun talking to you. thank you. Yes, go Thank on. you. So the first, so let's, ladies and gentlemen, the first female guest of our podcast. Thank you for coming to the podcast and having this beautiful conversation. Thank you for inviting me. Just watch out for, okay, any friends who are watching this episode, Ranji's friend, if from tomorrow she don't talk to you, you know why she's talking about you. She's became famous, okay? So just in case you don't know what happened, you can just come back to this episode, like strategy, bro, वीर अब पढ़ा गाँव में अब हम छोटे लोगों से बात नहीं थोड़े लोग बात नहीं करते। करते, हाँ हाँ। I am not We sure. talk with people Yeah, yeah, at yeah, our yeah. level. I'm not sure even I'm getting in another episode with us, so bro, see, fear is Next time real, I huh? will charge. I will charge, bro. The fear is real, bro. The fear is real. But okay, we'll do this sometime again, huh? For Promise. sure. Even my fear has gone away. हाँ So you can call me anytime. हाँ, I will ठीक है। make sure to adjust something. हाँ, just something. अब चले, अब पता है क्या करना है, अब बस बातें करनी है। So again, Rajvi, thank you for doing this. Thank you for Hopefully coming to this our episode podcast. is quite good enough Yeah, and it is fun for you also. of course, bro, of course. First You female think that guest. was woman guest there, man? Like, okay, you are हाँ, सच है अचीवमेंट ब्रो, लाइक बहुत कम लोगों को मिलता है अचीवमेंट। अरे यार अरे मैं यार, ये अब वो इंस्टाग्राम के बायो में लिखूंगी, भाई भाई फर्स्ट इंस्टाग्राम बायो में फीमेल लिख देना। एक्सपीरियंस, फर्स्ट सही है। फीमेल गेस्ट एट द इनएक्सपीरियंस pod. नहीं, फर्स्ट पीपल गेस्ट एक्सपीरियंस एट इन एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस ब्रो, लाइक समटाइम्स आई बा- हम समटाइम्स आई सिर्फ फील लिखते लाइक हैं आई नीड ओवर दिस थेरेपी ब्रो। बायो शिट बट हम बहुत अच्छा बायो बनाते हैं। हाँ हाँ, sometimes I make this joke, a part of me goes like I need therapy. But That's great. yeah, cool. Fine. So Bye. bye bye.